𝗟𝗲𝗴𝗹 all right, so hi guys, a very warm welcome. Please let me know if you can see me, if you can hear me. Rather, aaj to because of some video driver error, I won't be able to, come face to face. But I'm sure you guys can hear me. Yes, guys. If you can hear me, quickly give me a yo in the chat. Don't worry, I'm not visible, right? And that's nothing to do with your internet or with some other error. Uh, uh, no problem. Audible but not visible. All right. So आज सिर्फ आपको हमारी आवाज सुनाई देगी and I'm sure that won't be a problem. Hi Jagriti, hi Devshri, Ananya, Harshvardhan, आरन बहुत बहुत स्वागत दीक्षा तरनप्रीत राम तनुष्का वेलकम अनीशा वामी यो आ गया जी सभी का बहुत बहुत स्वागत आप सभी का वेलकम गाइस वेलकम 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 हाय तुबा गुड मॉर्निंग खुशी गुड मॉर्निंग एवरीवन बहुत बहुत स्वागत आप सभी का welcome. So guys, today we are going to analyze the fourth all India open mock test that we conducted just a few days back, right? Today in this session we'll talk about lots of things. We'll talk about all the sections. Of course, you can see that apart from me, there's Alpa ma'am, there's KD sir, there's Ankur sir, there's Niveta ma'am. All of us will be taking this all India open mock test for you. Of course, we know that the exam is just around the corner, so we won't be, uh, just wasting your time, of course. So whatever things that are important with respect to your exam, whatever the learnings are, we will actually be sharing that with you guys. अगर ये वीडियो देख रहे हो और अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो फटाफट से दबा दो यार, किसका इंतजार करते हो? क्विकली प्रेस दैट लाइक बटन. लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, राइट? ठीक है, और घबराइए मत अगर मेरी शक्ल नहीं दिख रही है आपको, चिंता मत कीजिए, दैट्स नॉट योर फॉल्ट. ठीक है, आई एक्चुअली have some problems at my end. That's why I will not be able to come in front of you on on camera rather. ठीक है, चलिए. All right, so let's go. Done now. All right, so mark your presence guys. Everyone who's watching this video, quickly press that like button. There should be everyone who's watching should be pressing that like button, and of course if you haven't subscribed to us already, फटाफट से quickly press that subscribe button because we are bringing some super duper important sessions in front of you. We are covering crash course for all of you, as you are aware, and that is absolutely free of cost, and we are doing it on our YouTube channel. So what more can you ask guys? So all the sections are covered here, be it GK, be it critical reasoning, English, maths, legal, all the sections are covered here. So make sure that if you are someone who's not yet subscribed to the crash course, do subscribe. It's a great tool to cover our syllabus. So all in, now is the time to just quickly analyze overall the All India Open Mock Test number 4, right? Current affairs sections we'll start off with. So we'll be covering each section today in this session. So people who are watching us, it's my humble request that I've already shared that I won't be visible to all of you. So please, if someone is new to our, our session, and if they are inquiring about it, it's my request to all of you that please answer them politely, right? All right. Okay, so guys, here we go. Look at this. This is the general overview of the entire, section that we, just solved a few days back, I'm sure. So you can see here English, GK, and all these other sections are mentioned. 120 minutes there were just as per the CLAT pattern, right? So no major changes as such. So there were 6 passages here. When we talk about, there were 6 questions each, rather 5 passages here in general awareness section, and the surprising factor is the number of questions in current affair and static GK question. So there were more questions in static GK as is the norm in many CLAT exam. You can see here the ratio was 17:13, right? 17 questions for static GK and current affairs 13. But the level of difficulty was easy to moderate, in line with the previous year pattern of CLAT, right? So the static GK questions were not core static in nature, right? So they were actually related to the current affairs
as is the norm, as is the way in the CLAT exam, of course. So these were the passages and their themes. Look at this. First passage, we had 6 questions, and the theme was about national games, right? Sports. Second passage, that you must be remembering, last year also there was a passage on sports. See, passage number 2, national affairs. Of course, national affairs, super duper important it is. So 6 questions on national affairs, on Competition Commission of India, they were there. Then the 𝗟𝗲𝗀 scheme was also discussed here, right? So all these things were here. All right. Now, how many marks did you guys score? You have to share that as well with me. So quickly do share how many marks did you score in this particular section. If we talk about passage number 4 and 5, you can see there was a passage on environment, and then there was a passage on dolphins as well. We can say that this passage belonged to, it had international, data as well, which the passage was sharing, plus obviously the national affairs too. So dolphins. Now, in-depth analysis. Look at this. 160 to 270 words. There were the passage length, right? So 5 passages with 6 questions each. There was this one passage which actually required to go through, not entirely, but just a few things that were supposed to be read. Otherwise, majorly you could have just skipped the passage in total, right? चलिए, so very good Devshri, a great score yaar in GK, 20 plus in just general awareness is fabulous. What about the rest of you? How many did you score? Quickly do let me know. So 5 passages with 6 questions each. Then these themes included national, international, right, and sports, as well as environment, right? So all these passages, uh, you can see, were in line with the CLAT exam previously. There were direct questions as well as static GK questions which were related to the passage. Now, if we look at the breakup, you can see the static GK questions related to the current topics dominated this section with 17, right? So 17 static GK, current affairs 13 questions there were, right? So 30 questions in total. Whenever there was more static questions, more chances of us scoring better, right? So guys, now this is a very important section. If this is your strong section, if this is your strength, your marks obviously should be way above 20, right? In the mid 20s or higher 20s, this should be the ideal marks, ideal score. But the amount of time you take for this section cannot exceed 8 to 9 minutes, right? So try to do it in as less amount of time as possible, because the reading of the passage actually is not required in most of the questions, most of the passages. I know with mock 22 and 23 things were different. I'm sure you all who gave the BYJU'S exam prep CLAT mocks are aware that the recent mocks had questions which required you to go through the passage. But then again, it's a one-off incident, right? If we look at CLAT previous year papers historically, that's not the case, right? So uh, even if it is, right, if there's this case where you are supposed to read the passage, no worries, right? So have this buffer of 2 minutes where you can quickly browse through the entire passage and then you can move forward. If it is your average where your score is around a 15ish, right, in late tens, right, in that case 8 to 10 minutes you can devote to this, right? And if it is a weak section, why to devote more amount of time, right? Less, 7 to 8 minutes. And if we are not scoring good here, we are just about starting, we are good in other sections, we are good in reading, then okay, no problem. If it is your weak section, don't waste too much amount of time here, move on to the other sections. Use our negative marking strategy and other tips that we have shared over time. Now, the general awareness section, you are all aware what actually does it demand. It demands good knowledge of your reading, obviously, and your current affairs. Plus, related static GK is also very important. Guys, if you haven't subscribed to our YouTube channel, फटाफट subscribe कर लीजिए. And if you haven't subscribed to our app, so quickly subscribe our app as well, right? And here in on our app you'll get free 3-day trial, so do check that out as well. Now let's move on to a few questions. The first passage, you can see, actually talked about national games. We are all aware, where did the national games are were conducted? KIG 37th national games conducted in Goa.
Now the question is, who inaugurated it, right? So here the entire passage, if you start reading it, it just talks about national games. The was felicitated by this person, that person. Prime Minister inaugurated the 37th edition in which place, right? And here they've given this hint: Jawaharlal Nehru Stadium in Margao, right? So hint was also given. Then Chief Minister's name Pramod Sawant was also given. So many hints. Obviously, it will be very easy for us to get the answer. And here redacted as to Indian Olympic Association president. So very simple. We've understood what are the kind of questions that can be asked in the passage. Let's move on to the question now. 37th National Games inaugurated uh, by Prime Minister at which of the following state? Redacted as one. We are all aware the answer is Goa. Right? So ये तो सभी का सही जवाब गया होगा. I'm sure this was right for everyone here watching this video. Very good. Good job. I completely left the dolphin passage. That was probably the easiest beta. So guys, very easy question to begin things, right? All right, let's move on to the second question. Quickly share the answer. The right answer, all of you are aware, it is PT Usha, the president of Indian Olympic Association, the first female to do so. All right, ये बताइए फटाफट से आप सभी को पता है थर्ड क्वेश्चन का आंसर. ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन आंसर क्विज तो खेल नहीं रहा है आपके साथ यहाँ पे, तो कुछ चीजें मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको. क्विज तो आप ऑलरेडी दे चुके हो ये एग्जाम, तो आपको ज्यादा इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है. बस कुछ चीजें ये बताऊंगा कि जैसे यहाँ पे मैस्कट पूछा है, so this can be the same case if we're talking about cricket. The cricket World Cup was conducted this year where India was the runner-up and Australia were the winners, right? Virat Kohli the most runs scored, and Mohammad Shami most wicket taken. So this becomes important for us. Mohammad Shami became the first bowler to take 50 plus wickets in one day World Cup history of Indian bowlers. So that's also a big thing for us. So do remember that. Mascot पूछ सकते हैं हमसे, venue पूछ सकते हैं हमसे, venue of the final पूछ सकते हैं हमसे. So these are the certain things that can be asked. Where was the first national games organized in 1940? Just do the same with Asian Games. Do the same with do the same with ICC Cricket World Cup as well. That the first World Cup was played in which year? So quickly do share. The first World Cup was played in which year? The answer is the first International Cricket Council World Cup was played in the year 1975. Right? So 1975, quickly write it down. Now, after that, the first winners, inaugural winners were West Indies. Right? And the venue was England. England was the venue. All right. Very good. So earlier it was decided that the World Cup will always take place in England. So that's why 75, 1979 and 1983, all three World Cups were played in England. And the first time the World Cup was played outside England was actually in India in the year 1987. That time 𝗟𝗂𝗴𝗹 𝗵𝗀 sponsored the entire World Cup. He wanted the World Cup to be called as Reliance Cup, but that wasn't to be. Right, so do remember this. This is also a very important fact which can be asked in the exam. All right, and people who are watching us and you are yet to hit that like button, भाई किसका इंतजार कर रहे हो, फटाफट से लिख डालो. यहाँ पे राइट आंसर आप सभी को पता था, मुंबई था पहला एडिशन. इसके साथ ही what is the rank of India in Asian Games that were held in Hangzhou, China? The right answer is fourth. Right, for the first time we breached the 100 medal barrier. So more than 100 medals we were able to secure. Now, who among the following became the first Indian player to became the Indian chess player to defeat world number one Magnus Carlsen in classical chess 2023? The right answer, K. Murli. K. Murli has done this feat. We have studied this numerous times at various places, especially in the Monday quiz, weekly quiz that we do. Right? Now, guys, we are going to conduct a very important, helpful workshop for you. And this workshop is a 6-hour non-stop marathon on our YouTube channel. 1st December, 11 a.m. Do not miss this. Right? So, dedicated to you guys, all of us will be there. All right, the second passage actually talked about the Competition Commission of India. So, we are all aware that it's just passage talking about CCI. We can directly move on to the
passage. No need to read this because obviously the answer will not be available in the passage. So first one, Competition Commission of India is a dash body. We are all aware that the Competition Commission of India was set up after the constitution was made, of course. So it cannot be a constitutional body, cannot be a judicial body, because Competition Commission of India क्या है मतलब, it is not a body that punishes or does anything of that sort. It is not an investigation body also. It is a statutory body. It finds its place in through a statute. It has its power mentioned in a statute. That's what is a statutory body. So of course, seventh question A is the right answer. Sheer elimination, right? So here, which is not a function of the Competition Commission of India? Which among them is not a function? So here the answer was only second one. This is not a function of the Competition Commission of India. Obviously, growth and development होना चाहिए, fair trial होनी चाहिए, ये तो है ही है, हमें पता ही है, right? Efficiently carry out competition advocacy, spread information on the benefits, implement competition policies, ये तो of course होना ही होना है, right? It also issues guidelines for disclosure of information and operational transparency for investor protection, pricing of issues, bonus, preferential issues. ऐसा कुछ तो होता नहीं है. Disclosure of information कहाँ है हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा सख्त? So the right answer of course has to be option B. Again, sheer elimination. Current chairperson कौन है? तो हम सभी को पता है. The right answer is रवनीत कौर. बढ़ते हैं आगे. 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस. ये अब देखिए कैसे रिलेट किया यहाँ पे इंटरनेशनल करंट अफेयर को. तो ये कहाँ हुई? ब्रिक्स आईसीसी. बताइए 2023 कहाँ हुई ये? So the right answer, hi Hitesh, hi everyone, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का. The right answer here was, it was option D, that is New Delhi, right? चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे. National Anti-Profiteering Authority. Now look at this. Has been established under which of the following acts? Here the right answer was the GST Act, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए अब मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव. अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है. हमें पता है पैसेज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो नहीं होगा. ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन. दिस वाज रिप्लेस्ड. 1969 का एक्ट रिप्लेस होके 1969 का खुद का एक्ट तो बन नहीं सकता. तो क्या है जी वायबल ऑप्शन ओनली हियर? द राइट आंसर इज ऑफ कोर्स द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. इतना आसान लड्डू क्वेश्चन था आप लोगों के लिए. और एग्जाम में भी अगर हमें चीजें नहीं भी पता है, if we are not aware of the answers, do not worry. Once we look at the questions, once we are regularly doing things, we'll be able to answer most of the questions. So don't worry at all, one bit. Okay, guys, do not forget to join us for the All India open. We are conducting a session for everyone, pan India CLAT 2024 detailed analysis. This is to be done on the 3rd of December, and on the 10th of December we'll be doing analysis for the ALET exam as well. So do not miss these analysis. We all will be there. And guys, the test series, if you're looking forward to enroll, if you haven't enrolled already, फटाफट से एनरोल कर लीजिएगा. 55 मॉक टेस्ट हैं, 25 क्लैट स्पेसिफिक, 15 एलिट स्पेसिफिक एंड 15 अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स. यू स्टिल हैव टाइम टू अपीयर फॉर क्वेश्चंस, मॉक्स. तो दीजिए, जितने ज्यादा दोगे क्वेश्चन, जितने ज्यादा करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलना ही मिलना है, राइट? नाउ द थर्ड पैसेज एक्चुअली टॉक्ड अबाउट द गोवर्धन स्कीम. Now, Govardhan scheme has been discussed in various places. We've covered this in classes as well as YouTube, and बहुत जगह cover करी है. तो of course, I expect correct answers here. ठीक है जी? चलिए, thank you Derek Shefford बेटा for informing. Well done. All right. Now, when we're looking at this, in last few months, Indian government has introduced several policy changes to accelerate growth and investments in the biogas sector. The entire passage talks about Govardhan, and here something is redacted as one. So let's read this. At the global level, in partnership with USA and Brazil, the Indian government has initiated the Dash to provide a platform for exchanging knowledge and technologies. Now, this has been discussed in the classes in great detail. Which, what are we talking about? What is the scheme we are talking about? Quickly, do let me know. Now, we have seen what exactly is redacted as one. The entire
if you start reading the entire passage, of course, it will be time consuming. So that's not required, of course. Let's move on to the questions. So the first was, which of the following is the largest composition of biogas? We are all aware it's methane, right? Chaliye, so methane was quite easy here. 13th question. Moving on. What is the full form of the 𝗟𝗲𝗀𝗹 scheme? So we are aware of this. We have discussed this. I'm sure you got this one right as well. Galvanizing organic bioagro resource dhan. So option D here is the right answer. And now, what is redacted as one? What is redacted as one? The right answer. This was launched by world leaders to expedite the global update of the biofuels under India's G20 presidency. It was a global biofuel alliance. Global biofuel alliance is the right answer. Chaliye, next. With reference to the term flex fuel, recently seen in the news, consider the following statements and share which of the following are correct. इनमें से क्या सही है ये बताइए. क्या है जी आंसर यहाँ पे? So the right answer here with respect to flex fuel, actually all of the statements are true, right? सारे के सारे सही है. Toyota has announced the launch of India's first flex fuel car, E85, right, is a gasoline ethanol blended containing 51 to 83% ethanol. ethanol क्या है दोस्तों? It's a very very cheap, और आप कह सकते हो फ्यूल जो कि ऑब्वियसली रेट्स जो है पेट्रोल के डीजल के बहुत ज्यादा गिरा सकता है, right? So it can help India reduce its dependence on fuel imports. हम अगर बाहर से फ्यूल लेते हैं तो अगर इथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं हम, तो यार कितना फायदा हो जाएगा. सोचो आप 51 से 83%, मतलब थोड़ा सा फ्यूल करना है, बीच में इथेनॉल मिला देना है और हमारी गाड़ी भी चलेगी बढ़िया. मीथे हमारे जो एमिशंस है वो भी कंट्रोल में रहेंगे, चेक में रहेंगे, कम पोल्यूशन होगा, प्लस ऑब्वियसली हमारा पैसा भी बचेगा, हमें फ्यूल कम खरीदना पड़ेगा बाहर से. सो फायदे ही फायदे हैं फ्लेक्स फ्यूल के. सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर हियर करेक्ट. ओके, COP26 काफी आसान क्वेश्चन. नेट जीरो एमिशंस का टारगेट क्या है इंडिया का? This was decided in the year 2021. CEO Conference of Parties 26th session. The right answer is 2070. 2070 is the right answer. 2070. ठीक है जी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने. श्रेष्ठ का क्या मतलब है? श्रेष्ठ stands for what? श्रेष्ठ stands for what? So here the right answer is option A, that is the scheme for residential education for students in high school in targeted areas. So here NGOs and residential high schools will be benefiting from the Ministry of Social Justice and Empowerment scheme, that is Shrestha, where the students will receive different forms of aid. All right. Guys, do remember that if you're preparing for the year 2025, or your friend is preparing, or your relative is preparing, anyone is preparing for CLAT 2025, recommend them this session. 2nd of December, 6 p.m., 12 months to CLAT, right? So do not miss this. Nivedita ma'am will be there. Link for the registration is in the description of the video. All right, moving on to the next few questions. So you can see here, the third question actually talks about the third passage, the next passage rather, talks about the three basins threat report. So again, this is a passage just talks about environment, ecosystem. Let's move on to the directly to the questions. If you start reading, it will take us a lot of time. Very simple question to begin things. Capital of Congo is actually asked to us, right? So the summit of three basins was held in the capital of Republic of Congo. That's what is asked to us. The right answer here is option A, that is Brazzaville. So look at this. A is the right answer. Static question, quite easy. Dash refers to which of the following region which encompasses 80% of the world's tropical forests and 2/3 of terrestrial biodiversity. What is the right answer? 20th question. The right answer is option B. It is the Congo Basin, Amazon. Whenever it is Amazon is written, of course, we know that is the right answer. And the Southeast Asia region. So B is the right answer. Chaliye next. Which continent is home to the largest rainforest in the world?
रेन फॉरेस्ट सबसे बड़ा कहाँ है दोस्तों? तो दैट इज द राइट आंसर इज साउथ अमेरिका. So B is the right answer, South America. All right, in which ocean Amazon River falls? So all these are static questions, core static question, nothing to do with the passage. That's why you can save easily 5 to 6 minutes just by not reading the entire passage, of course. So the right answer here is option B, that is Atlantic Ocean. Moving on, look at this static questions. Which of the following river crosses the equator twice? We all know the right answer is the Congo. Moving on, next, Intergovernmental Panel on Climate Change was established by which of the following body? Again, a static question. The right answer, United Nations Environment Program. Right? So, chaliye. Last passage. Before we move on to that, a quick reminder. 1st December, 11 a.m., 6 hours non-stop marathon. We are all there with you. You make sure that you are there as well. All right. The last passage here, we are talking about the dolphins. Now, someone said that they actually left this passage, है ना? अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाला पैसेज जो था, it actually talked about various statistics related to dolphin, right? So dolphin population in the Amazon, in the world, and various IUCN, etc. Things as well. चलिए. So 25th question is here in front of you. Which of the following statement is false? Incorrect कौन सा है इनमें से about the global declaration for river dolphins? Now here, which of the following statement is false is the question. Right answer is only the first one. The declaration is designed to guide 15 nations where river dolphins inhabit. So there are more than 15 actually. So बाकी सारे statements जो हैं इसके, they are actually correct. Now here, when we look at the passage, you can see ये रहा. Representatives from the 14 countries were present here in the conference that was conducted. So there was a hint as well for all of you. All right, consider the statements on dolphin and choose the correct answer. So here are the 3 statements given. Dolphins are found in fresh waters of River Ganga and Brahmaputra. Dolphin sanctuary is there in Bihar, and the presence of dolphin is an indicator of health of river. The right answer is, of course, all of these. All the statements here given to us are actually correct. ठीक है? So passage में एक आंसर मिल गया हमें 25th क्वेश्चन का, 26th क्वेश्चन कर लिया. 27th, which of the following is the largest dolphin species in the world? Yes, Tandila, correct. 14 of them attended, है ना बेटा? चलिए. The right answer, 27th question, is option D. It is orca. Orca, the largest dolphin species around the world. Next, these are the statements given. अब ये देख सकते हो आप, काफी आसान चीजें थी आपके सामने. यहाँ पे भी all of the above. तो हमारी जो all of the above वाली ट्रिक है, आपने देखा सभी जगह पे वो वर्क करती है कि नहीं? चलिए, डन है. ऑलराइट, तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने 29th. इसका भी आंसर आपको पता है डी था. और ये रहा 30th क्वेश्चन आपके सामने. ये देखिए, जहां पे यांगजे रिवर के बारे में कुछ पूछा, जहां का आंसर ये था बैजी. नाउ 30 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड हियर. अब यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस में से आपने देखा होगा, अगर आपको कुछ भी नहीं भी आता होगा, अगर आपको जीरो नॉलेज के साथ भी बैठे होगे, तो भी इवन इन दैट केस आप आराम से जो है करीबन 15 से 17 मार्क्स, तो कुछ भी नहीं आता तो भी लेके आ सकते हो. शेयर एलिमिनेशन, शेयर कॉमन सेंस, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है. अब इसके साथ ही अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि व्हाट यू हैव टू डू, देखिए सबसे पहले क्रैश कोर्स आपको लगातार देखना है. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लो. भाई मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं और अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया. इतनी कंजूसी करोगे ना तो फिर देख लो गड़बड़ हो जाएगी. जल्दी से प्रेस दैट लाइक बटन. बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है दोस्तों, लाइक का बटन दबा दीजिए फटाफट से. क्रैश कोर्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं लगातार. आपको पता है सेशंस आ रहे हैं आपके पास एवरी डे एट 9 PM वी कंडक्ट सेशंस, so do not miss that. And do not forget to join us for the detailed CLAT 2024 analysis as well as ALET 2024 analysis that we will be conducting on the 3rd of December
as well as on the 10th of December. So do not miss us. We'll be conducting these super duper helpful sessions for all of you. So this was the already open mock test. Easily you could have scored a 24 here. If this was your strong section, 24 was easily achievable. If it was not so strong, even then 20 marks, 18 to 20 was easily possible. And even if it was your weak section, 14 marks तो easily through easy strategy क्वेश्चंस आप आराम से आ सकते थे. ठीक है जी, चलिए तो ठीक है जी. अब अगला जो है नाम, अगला जो फैकल्टी है वो आएंगी अब अल्फा मैम. ठीक है जी. तो चलिए जी, तो अब मैं आपको जाने से पहले फटाफट से ये बता देता हूँ कि नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें अल्फा मैम विल बी देयर एंड मेक श्योर दैट you are attending this session to the T to till the very end. And अगर कोई भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी पूछना चाहते हो, feel free to reach out in the comments of the video. Thank you so much guys. जीके के लिए बस इतना ही. Just keep doing what you are. Practice in the form of questions. That's about it. We'll meet again in the next session. Till then, take care. Bye bye. And make sure that people who are watching us on the app quickly press that refresh button, right? So that whenever Alpha ma'am comes, you can see her from the first second itself, right? Chaliye. All right, guys. Thank you so much. We'll meet again. Bye bye. Good morning and welcome to BYJU'S exam prep. Thank you so much, Abhimanyu sir, for letting me continue with the session. I hope everyone can hear and see me very, very clearly. I hope I'm clearly audible, visible in the app as well. If you can't hear and see me clearly, please refresh the page. It's going to be working for you completely fine. So, I'm sure fourth and our last open All India mock आप सबने दे दिया था. Yes, audible and visible. ठीक है. तो देखो, मेरा एजेंडा ये नहीं होगा कि मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूं. The solutions are there in the mock test. There are video solutions as well where I've explained every single answer. The idea will be to discuss what exactly should you be doing now, how you should be taking mock now, how you should be attempting mocks now, so that your scores will increase from whatever level it is at. Okay, so that's what I'm going to be doing in the next 30 minutes. Before we proceed, our crash course is going on our app as well as on our YouTube channel every single day. And today, I think we have a class with KD sir at 9 p.m. Don't miss out on that. और प्रीवियस क्लासेस जो लास्ट 1 मंथ से हो रही है, आपने नहीं देखी हैं अभी भी, तो प्लीज उनको वापस जाके देख लीजिएगा. दे आर रियली रियली इंपॉर्टेंट वंस एंड दे विल इंश्योर दैट योर कंसेप्ट्स आर क्लियरर देन व्हाट दे वर बिफोर. ठीक है. सो ऐप में भी, अच्छा ऐप में एक बार बता दो मुझे, ऑडिबल विजिबल है क्या? किसी का आंसर नहीं आ रहा ऐप में. ठीक है. ऑल राइट. तो आई एम श्योर आप क्रैश कोर्स देख रहे होंगे. ठीक है. अब बात करना स्टार्ट करते हैं मॉक 21 की, विच वाज द लास्ट ऑल इंडिया ओपन मॉक. वी हैड 9 crazy direct factual questions in this mock, which were, as I say, sitter questions. They are clearly written in the passage. Okay. Apart from that, we had easy for vocabulary based questions. There were no grammar questions. Tone based questions were also easy. All in all, the entire mock was very, very easy. Now, I don't know what your score was, how much you've scored, but the idea is, could you have scored better there? आपका स्कोर कैसे इंक्रीज हो सकता था, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहली चीज जो मेरे हिसाब से आपको अभी इस जंक्चर पे ध्यान देने की, you cannot see the video solutions mock 21. Others, guys, can you access the video solutions of the mock specifically for English? If you cannot, then I'll get that rectified. But for Tanzila, if only you can't see that, catdoubts@byjus.com पे mail कर दो. Somebody will rectify that. अच्छा, none of you can see that. I'll get that rectified before the class ends today. ठीक है? I'll get that checked. ठीक है. तो let's come back to discussing अभी आपकी mock taking strategy क्या होनी चाहिए. ठीक है. सबसे पहली चीज, please identify easy questions in every single section.
Now see, a lot of kids still tell me that, ma'am, I give so much time to one section that I'm not left with any time for the last section that I take, that is usually mathematics for a lot of you. ठीक है, क्योंकि मैंने लीगल को 45 मिनट्स दे दिए, क्योंकि वही तो मेरे मार्क्स आते हैं, तो मैथ में टच ही नहीं कर पा रहा हूँ. इंग्लिश को मैंने 40 मिनट्स दे दिए, तो मैथ्स के सारे क्वेश्चंस रह गए. But that's, I think, a very, very wrong strategy that you can adopt right now to take a mock test. I'll tell you why. Because every single section में आपने कुछ ना कुछ तो मेहनत करी होगी by this time, I'm sure. And every single question will have some sitter questions. You need to know what sitter questions are. Can you point out some sitter questions to me out of the list here? What, according to you, are some sitter questions that you will certainly attempt when you take a mock test? Can you point it out for me, everyone? Can you point out some sitter questions that you certainly can or will attempt when you take a mock test? Absolutely, yes, direct questions, correct. Apart from that, yes, Devishri, I'll agree with you, vocab questions as well. Kyunki even if your vocab isn't top notch, by reading the sentence, you'll know the meaning of the words. We did 2 words in the last class, behemoth and one of the other words, I don't remember clearly. But those questions were very, very direct. It was given. So one sitter question here, of course, is a direct question. But apart from that, a lot of vocab-based questions, grammar-based questions are also sitter questions. A lot of inference-based questions are also sitter questions because the options are so easy. So when you look at a question and when you look at its options, you need to know इसमें से easy कौन से हैं और कौन से tricky हैं, कौन से मुझे attempt करने चाहिए और मैं कौन से छोड़ दूंगा. I believe title based questions are also sitter questions. They're easier to be identified than a main theme based question, क्योंकि यहाँ options elongated, broader होते हैं, but title क्योंकि shorter होता है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता. You know exactly where the correct answer is or which the correct answer is. So what I'm trying to tell you is that according to what you worked over these months, know, okay, these questions are easy for me, these questions are difficult for me. And whatever section I am in, I am for sure going to be attempting these questions. And the problem that a lot of you tell me that, you know, I give a lot of time to one section, so I couldn't spare time for the other section. The only way to deal with it is to set timing for each section. I'm sure a lot of you do that already. Yes? Yes, scruple. Yeah, I forgot that. Correct. है ना? तो set timing for each section. Now, कैसे set करना है? For example, 25 minutes. आपने English को दे दिया. The moment is 26, you have to leave that section. Even if you have 1 or 2 passages left, you have to leave that section then and there. इसका मतलब अगर 25 minutes हैं, in 25 minutes में I have to attempt all the sitter questions. I don't have to attempt the entire section. All 24 questions, probably not. I have to attempt the sitter questions. So please know आपके लिए sitter questions कौन से हैं. They may vary from person to person. For example, for me, main theme based questions are a set of sitter questions. Maybe not for you. देखो आपके लिए sitter questions कौन से हैं. ये 25 minutes में आपको ये sitter questions कर लेने चाहिए थे. And how will you be able to do that? By choosing your passages very carefully. Passages कैसे carefully choose करते हैं? 5 passages आए हैं, ठीक है? You have 5 RCs. Out of 5, 4 may be very, very easy, 1 may be a little difficult, 3 may be very, very easy, 2 may be moderate. Easy according to you. One topic that you are comfortable with. 1 minute to the section. Out of 25 minutes, skim through the section and see how many passages we have. Out of these passages, these are the topics in which passages have come. Out of these are the topics I am going to be comfortable with. I will start with those passages. Starting with the very first question is not a very wise thing to do. Please strategize. Remember, CLAT is a test of your speed. तो 1 minute सबसे पहले हम पेपर देखेंगे, English का section देखेंगे. We'll see how many passages do we have, how many questions do we have. Remember, CLAT gives us a bracket of questions. It doesn't tell us an exact number of questions. So the exact number of questions may be 22 or 26, right? See how many questions are there, see how many passages are there, and see the topic of passages, and then accordingly strategize. ये passage number 1 करूंगी, ये passage number 2 करूंगी, ये passage number 3 करूंगी, ये 4 करूंगी, 5th को नहीं करने वाली क्योंकि मेरे लिए tricky है. I'm going to leave 5th.
Or probably I just skim fifth and only mark those two sit-up questions that I could locate the factual ones or vocabulary ones. Vocabulary based question you can answer even without reading the passage, right? Most of the times you could do that. So identify your sitter questions, identify which is going to be the first passage you're going to start with and how you're going to proceed in the next 25 minutes. The moment it is 26th minute, leave the section then and there. So please identify your strength with each of these sections, your sitter questions with each of the sections. Second thing, by this time, you should have reached an 80% accuracy. अभी तक आपकी accuracy कितनी है मुझे एक बार comment section में बताओ. What's your accuracy? I'm sure you've given a lot of marks already. What's your accuracy that you see? Yeah, now it's working fine in the app. Chalo, fine. What's your accuracy in the box? Because as far as my understanding is concerned, it should, for most of you, reach an 80%. 75, 72. तो बच्चे देखो अभी टारगेट क्या करना है नेक्स्ट 1 वीक में उन चीजों पे प्रैक्टिस करना है एनालिसिस के साथ that will help you reach an 80% of accuracy, which will of course reduce your negative marks and increase. Oh, okay. नहीं देखो 70 से नीचे तो अभी आना ही नहीं चाहिए. अगर आपका 70 से नीचे accuracy आ रहा है तो you have to restrain your attempts. Don't mark so many answers. You'll end up getting so many negative marks that it's not a wise thing to do. Please restrain your attempts if your accuracy is below 70. But if it is 70 or plus, you're still at a good place. You can actually reach an 80 by doing some detailed analysis of the last 3 papers. When you see the last 3 papers, you will know what are the common mistakes you're doing. And through that, you can easily increase your accuracy from 70 to 80%. What do you do with the last 3 marks? देखो last 3 आपने जो marks लिए हैं, उसमें आपने कैसी mistakes करी है? Common mistakes करी है क्या? हर बार इंग्लिश को ज्यादा टाइम दे दिया, मैथ्स के लिए टाइम नहीं बचा. हर बार सिली मिस्टेक्स कर रही हूँ. ऑप्शंस पढ़े ही नहीं मैंने, सीधा इम्पल्सिव के आंसर मार्क कर दिया. नॉट नहीं पढ़ा मैंने. Every single time I get distracted while I'm doing mathematics. See what's those set of common mistakes that you're doing. If there is a set of common mistakes, you're very likely to repeat the same common mistake on the D-Day too. And of course, we can avoid that. We have time in our hands yet. Please, today you can sit with the last 3 papers, last 3 mocks that you've given and see if you have a link that between all the 3 mock tests. If you see common mistakes that you've done, identify the common mistakes. By avoiding them, you can easily increase your accuracy to 10%. That's actually probably very likely a coincidence because the difficulty level of the paper would vary. If you precisely get 16.5, it's only a coincidence. You need to figure out why are you getting 16 and not a 20 plus. That's what you need to do. You need to analyze your mock tests, which I believe you haven't done yet. Please analyze it. That's exactly why this session is conducted, to force you to analyze the papers correctly, because every single person watching me live right now will have a different way of taking the paper, will have a different strategy, will have a different strength or weakness. So why exactly you getting a specific score is specific to you only, and only you would know that looking at your scores. ठीक है, तो अनन्या मैं आंसर करूंगी आपका क्वेश्चन. अभी आपको क्या करना है, पेपर कैसे लेना है, नेक्स्ट मैंने आपको ये बताया. आपको common mistakes ढूंढने हैं in the last 3 sections. You have to identify what are the common mistakes you've done. Next, you have to aim for an 80% accuracy. If it needs you to work harder, solve more questions, take more sectional tests, do that. If it takes you to do some theory right now, which you still have time for, you can still do that. You can take up a new topic, still you have time for that. Okay, you can do that. If your accuracy is lesser than a 70, please restrain your attempts. Don't mark so many answers, because ultimately you're going to get a lot of incorrect scores then. Third, you can start solving offline papers now. You can take a printout of the papers that we provide you with, because right now practicing OMR sheet is your priority. I saw a lot of kids discussing it in the Telegram groups and in the classes, that they take up a lot of time, they make silly mistakes while they fill out OMR sheet. You can't afford to do that.
So every single time now that you're taking a mock, you have to practice the mock on an OMR sheet. You can get a printout of an OMR sheet, get it photocopied, or go to an actual stationery shop and get a bundle of OMR sheet. Every time you take a mock, fill out the OMR sheet very, very carefully. बहुत केयरफुली OMR शीट फिल करना स्टार्ट करो. ये आपको हेल्प करेगी कि हम कैसे लास्ट में टाइम सेव करेंगे और इनएक्यूरेसी से बच सकते हैं. ठीक है. My suggestion, 5 questions at a time. You can do more if you're okay with that, but don't accumulate the entire paper for the end. You'll end up marking none with that way. So practice papers offline. Your accuracy may increase with that. Practice filling OMR sheet along with your name and everything. Pura bubble bharna, which is time consuming. And the fourth thing, please analyze your paper within the next 24 hours. You have to do that. देखो, when we constantly say paper analyze करो, मैं क्या करने को बोलती हूँ आपको? Please understand that. One, now that you're taking one mock every single day, immediately after you're done with a mock, take a break for 10-15 minutes. Go grab some coffee, chai, milk, whatever you drink. Come back, sit and write down. Before you even see your scores, write down according to you what mistakes you did. Write it down. What mistakes you, according to you. I got a lot confused with main theme based questions. I got stuck with that analytical reasoning question that did not deserve my time. I spent a lot of time to legal reasoning that was unnecessary. I got distracted while reading a passage and I reread it 2 times. According to you, what mistakes you did, write that down. Then open the detailed analysis of every section. First, pick up the correct answers. I think I have that written here for you. Yes. First, pick up the correct questions. क्या correct हुए? ठीक है? That means आप उस topic के साथ comfortable हो. You're okay. You can go ahead with it. You can take risk with such questions more further on. So if you're getting main theme based questions correct, next time, even if I'm confused, I can probably take some risk. I might get correct. Okay. So first चीज check करोगे correct questions. Second check करोगे incorrect questions. देखोगे क्यों incorrect हुआ. Concept clarity नहीं है तो next time नहीं mark करूंगा उसको. Silly mistake है तो next time बहुत careful रहूंगा उसको mark करते time. ठीक है. Identify incorrect ones. अच्छा. मैम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में करने से कम attempts में 10 questions का difference आता ही है. Of course, that's exactly why I'm asking you to do it offline. Because you'll have to be more comfortable with that. I tried to complete online mocks within 1.5 hours. Harshvardhan, but I hope you're practicing filling out OMR. Your strategy might work, but that on-hand practice is very, very important for you. So you can follow the 1.5 hour strategy, yet practice filling out the OMR because people make silly mistakes of making holes and crisscrossing and all of that. You're not allowed to do all of it. ठीक है. So mock attempting में analysis में what am I even saying? Analysis में marking, then find out the incorrect questions. See where you got these questions wrong, why you got them wrong. Was this conceptual error? Were these silly mistakes? Find them out. उसको redo कर लो एक बार. And unattempted questions जो आपने छोड़ दिए थे जीके के तो बिल्कुल करके आने क्योंकि वो mock में आए तो एग्जाम में आ सकते हैं. Please redo them. Every single question that a mock has is important for you. If you left them in the exam, give it some time in the analysis and redo these questions. And know what are easy questions according to your understanding. You should have attempted them. Like factual questions in English. If you do them, it's going to be easier for you to pick them up later on in a time-bound manner with every single section so that you can attempt them easily. All right. Now, I have a question from Ananya कि vocab questions गलत हो रहे हैं. I will actually help you. Give me a second, guys. 1 minute, guys. I will actually help you how to get vocab based questions correct. Vocab देखो simple funda है. Before even you look at the options, don't look at the options. ठीक है. सबसे पहले wherever the word is highlighted, go back to that line and read that line. I probably the line is
Signal. So, okay. So at a signal from someone in the balcony of the palace, this is a thing. Okay. It's a place maybe. You have to figure out what it contextually means. इस लाइन को 2 बार पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा कि इसका मीनिंग पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है. Read that line twice, you will know the contextual meaning. And then come to the options. Most of the times, there are going to be 3 synonyms that you can easily eliminate. Most of the times. Yet, if you do not know, then my child, the problem is with your vocabulary. You'll have to leave that question. But most of the times, only reading the line twice and eliminating synonyms will help you lead to the correct answer. That's how you attempt the vocabulary-based questions. 5 questions करने के बाद 2 MR fill करना, absolutely fine. I'm okay with that. What's a good score in English in this mock? According to me, this mock was an easy one, barring one passage. Let me take you back to that one. Okay, so now good score देखो completely depend करता है आपका English आपका strength है, weakness है या average section है. If English is your strength, you should have by default scored a 20 plus for sure, undoubtedly. Because if English is your strength, this section does not even come close to being a difficult one. So 20, in fact 22 plus, I would say, आपका आना चाहिए था if English is your strength. ठीक है. ब्रेवरी अवार्ड केक वॉक पैसेज था, इनफैक्ट काफी इजी था. सिटीजन्स वाला इजी टू मॉडरेट पैसेज था. ओहायो अबॉर्शन लॉ इतना न्यूज में था दैट यू वुड नो दैट इट वाज एन इजी वन. मैथ्स अ लिटिल टाइनी बिट मॉडरेट. क्रिप्टो करेंसी, कितनी बार क्रिप्टो करेंसी किया मुझे बताना है एक बार मॉक टेस्ट में. हाउ मेनी टाइम्स हैव यू डन क्रिप्टो करेंसी इन योर मॉक टेस्ट इन योर क्लास शीट्स? Like a million times. अभी भी क्रिप्टो के साथ में कंफर्टेबल नहीं हुए ना, तो देखो आ गए ना एग्जाम में रिग्रेट करोगे. We've done so much of crypto over and over again. Please be very, very okay with cryptocurrency. I think this was a moderate passage, not because of the content, but because of the questions. So if you're scoring an 18 plus in this mock, I think you are good to go. But you can easily, you could have scored a 20 plus here with a little bit of analysis out of 24. But 18 score, you're good to go here, including the negative marking. ठीक है. तो इसलिए that's how you answer the vocab based questions. देखो इधर एक vocab word highlighted है. Florid detail. कैसी detail हो सकती है? Sentence पढ़ के बताओ. अच्छी हो सकती है, खराब हो सकती है. The sentence will tell you. Ananya, that way, okay? So, just a minute. I'll take you back to something. Yes. So, 1st of December, we have our Maha Marathon happening because this is going to be our last marathon, your last boost before you actually take the examination on D-Day. So, इस marathon को miss नहीं करना है. 1st December, 11 a.m. onwards, Friday, we are going to come live and all of us are going to take loads and loads of practice questions, grilling session. But I'm sure by the end of the session, you will have a massive headache because you've done so many questions, but you'll be a wiser person for sure. तो इस मैराथन को किसी भी कॉस्ट में मिस नहीं करना है. And we just a minute, there are just too many questions. Yeah. We have a test series. So if you still wish to prepare with us through a test series, because you need to take one mock test every single day, buy a test series for very, very nominal cost because you don't have a lot of time left for the examination. That's the number of our counselors. Call them and know more about the program. Alternatively, the link of the program is there under my video in the comment section. And marathon miss nahi karna hai. Now I'm going to be transferring the session to, yeah, even I'm very excited. So I'm going to be transferring the session to, but before that, Nandana has a question. Ananya, then don't do that. Do 5 questions at a go. I usually take 35 minutes to complete English and getting 70 to 75 accuracy. But whenever I complete within 25, accuracy go down, stick to 35. But you need to be very, very clear about where are you going to be reducing 5 minutes from or 10 minutes from. Which section are you going to be reducing it from? Make sure you reduce it from a weaker section to
if you are getting a 75% accuracy, good, but 75% accuracy आप all questions में लेके आ रहे हो, I'm fine. If you're only attempting 10 questions and getting a 75% accuracy, then it's not a good deal to give it 35 minutes, right? I hope that makes sense to everyone. So guys, I'm going to be transferring the session now to KD sir, where KD sir is going to be talking about the critical reasoning section. Stick with us, and everyone in the app, if you're unable to view KD sir, you need to just refresh your page if the page buffers. So stick with me, everyone. Here we go, and God bless you. जीके एंड यू हैव ऑल्सो डन इंग्लिश, ये मुझे पता है। और अब हम करने वाले हैं क्रिटिकल रीजनिंग। एज यू नो, दिस इज द लास्ट एनालिसिस सेशन of a mock before CLAT 2024. So we'll keep it short, keep it very very sharp, because you guys can utilize your spare time for doing something constructive. हमें पता है रील्स नहीं देखना है, कंस्ट्रक्टिव का काम का मतलब होता है यू वुड डू समथिंग बेटर, लाइक राइटिंग अ मॉक, एनालाइजिंग, समथिंग लाइक दैट, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू गाइज आर डूइंग दैट। सीरियस स्टूडेंट्स ही अभी तक लगे हुए हैं, जिन्होंने हार मान ली है वो तो कहीं ऑलरेडी रास्ते में पड़े होंगे, है ना। सो आई एम नॉट रियली टॉकिंग अबाउट देम। काफ़ी लोग हार मान चुके हैं ऑलरेडी, आई नो दैट, बट दैट्स ओके। हर कंपटीशन में ये तो होता ही है। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑल राइट, so good morning everyone. Just let me know in the chat box by saying good morning that you can hear me, see me, सब ठीक ठाक है, जल्दी जल्दी से। Right, so I can see a lot of names: Ranjana, Vipul, Ramakrishna, Ananya, Tuba, Harshvardhan, Devishri, Jagriti. So, and now remember, if you're watching me on the chat itself, then also you can say a quick good morning, है ना। चलो, I can see Seema, Aman, Gaurav, Vipul on chat. Remember everyone, if you're watching me on the app, then you have to refresh. एक बार refresh ज़रूर करना, तो कोई भी प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी। ओके, चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नेवा एट्सेट्रा। लेट्स बिगिन, क्विक, कोई ज़्यादा डिले नहीं करना है, तो जल्दी जल्दी से शुरू कर लेते हैं। नाउ दिस इज़ अबाउट एनालिसिस ऑफ मॉक CLAT 21, राइट। तो ये वाला स्पेसिफिकली उसके बारे में, बट द learnings can be applied across board. It is something like, you write one mock, वहाँ से learning होती है, हम सब में apply कर सकते हैं। Now you have only 1 week left practically for the exam. So I have a caution here. I have one very important thing, and that is, please don't try anything revolutionary. एक हफ्ते पहले कुछ भी रेवोल्यूशनरी ट्राई मत करना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेकेंड थिंग इज, प्लीज़ रूमर्स से थोड़ा बच के रहना। रूमर्स बहुत फैलाते हैं स्टूडेंट्स फैलाते हैं, मोटिवेटेड लोग फैलाते हैं, इन द सेंस दे हैव देयर ओन मोटिवेशन, फॉर एग्जांपल दे वांट टू सेल अ कोर्स और व्हाटएवर। सो प्लीज़ बच के रहना। फॉर एग्जांपल, ओ यू हैव नॉट डन दिस, मैथ्स में तो ज्योमेट्री आने वाला है इस बार, तुमने ज्योमेट्री नहीं किया। मैथ्स में इस बार वो प्रोबेबिलिटी पूछने वाले हैं। लीगल रीजनिंग में तूने ये नहीं किया, इस बार कॉन्स्टिट्यूशन से तो क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, इस बार तो सारा क्रिमिनल आने वाला है, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सीआर में सिलॉजिज्म नहीं किया, वो तो इस बार वही पूछने वाले हैं। सो प्लीज रिमेंबर, लास्ट मोमेंट लर्निंग का जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। आप प्रैक्टिस अभी भी कर सकते हो, लर्निंग वाला पार्ट थोड़ा कम कर दो। डोंट वेस्ट योर टाइम डूइंग एवरीथिंग, रनिंग अराउंड। हमारा क्लैट क्रैश कोर्स इज स्टिल गोइंग ऑन। आज भी रात के 9 बजे सेशन है, मेरे साथ है, एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स वुड टेक इन द कमिंग वीक ऑल्सो। तो आप ये वाला ज़रूर अटेंड करना, बट नई चीज़ें नहीं करना। हम बस प्रैक्टिस करवाएंगे, हमारे मैराथन में भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे, नई चीज़ें अवॉइड करिए। आई नो यू गाइज आर स्मार्ट इनफ टू नो दिस, बट एक बार बताने में कोई भी दिक्कत नहीं है ना। चलो भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट मी जस्ट चेक अगेन, सब ठीक ठाक ऑन द ऐप? यस, सब ठीक है ऐप पे भी। चलो भाई, तो बिफोर आई मूव ऑन, एंड लेट मी क्विकली आस्क, दिस इज CLAT 21, mock 21. I'm talking about only CR section, everybody. Please respond. 3 categories: easy, moderate, difficult. Please tell me, how did you rate the CR section? अगर आपने मॉक दिया ही नहीं है
और आप ये अटेंड कर रहे हो तो फिर शायद आप आंसर नहीं कर पाओगे, बट अगर दिया है तो यू कैन आंसर। हाउ डू यू रेट द क्लैट मॉक 21? ईजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट? कैसा लगा था? अरे बड़ा आसान था, मैंने तो धज्जियाँ उड़ा दी, ऑल 24 कर दिया, सब करेक्ट हो गए। मॉडरेट था, आई डिड अराउंड 20-21 क्वेश्चंस कर पाया, 15-16-17 सही हुए। बड़ा डिफिकल्ट था यार, मैं तो 17-18 क्वेश्चन ही कर पाया, 12-13 ही सही हुए। लेट मी नो जल्दी से। मॉडरेट 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 का मतलब है, दोज ऑफ यू हु आर सेइंग मॉडरेट, आई थिंक यू आर बेसिकली सेइंग दैट ओके आई स्ट्रगल्ड बट कर लिया, मतलब ऐसा भी नहीं था कि कर ही नहीं पाए, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, कर लिया। I'll share some very interesting inputs and I'll keep the session per se very short, तो एंड तक बने रहना है आपको, बहुत ज़रूरी बातें करनी है अभी, ठीक है। हर्षवर्धन says I found the wolf philosophy passage really difficult. Okay, all right. So इसके अंदर दो passages मुश्किल थे. One was the first passage which was basically about the role of aerial photography and then the wolf passage, right? तो wolf वाला passage भी काफ़ी मुश्किल लगा होगा, right? था या नहीं वो तो depends on the individual student, but लगा होगा, right? Okay, चलो good. I'm very happy that you guys have at least attempted the paper. That's very nice. तो पहले चलते हैं, थोड़ा सा quick analysis कर लेते हैं. Now, if you have seen the previous mocks, you may have seen that this mock was slightly different. This mock was very conventional, बहुत conventional mock था. Main point के 4 question थे, 4 passages थे, 4 mock main conclusion या main idea question थे. Fair enough. Direct question was practically not there. One question was there on the construction or the structure of the passage, which can be called direct, तो more or less it था ही नहीं. Inference थे 7 questions, tone style कोई भी नहीं था. Assumption 5, strengthen 3 and weaken 3, and there was one question on parallel logic, right? So very well structured mock. अगर आपने मेरी बात पहले सुन रखी है, मैंने I have been repeating this, I have talked about it like 21,568 times, that if you're preparing for CR, कुछ ज़्यादा मत करो, कुछ हाई फाई करने की ज़रूरत नहीं है. Conclusion, inference, assumption, strengthen, weaken, ये 5 क्वेश्चन टाइप कर लो, 80% सिलेबस आपने कवर कर लिया है, राइट? दिस इज अ वेरी कन्वेंशनल पेपर एवरीवन, ध्यान से देखो. 4 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस, 6 + 5 11, 7 18 22 क्वेश्चंस आउट ऑफ 24. तो मैंने तो 80% ही कहा था, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, बट आई होप यू गेट द ड्रिफ्ट, राइट? सो now remember, if you have not done CR very well and if you're thinking what to do in the next 7-8 days, क्या करें 7-8 days में, तो इनके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, इनमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बस इतना ही करना है. एक बार फिर कंक्लूजन क्या होता है पढ़ लो, इन्फरेंस क्या होता है पढ़ लो, एजम्पशन कैसे निकालते हैं पढ़ लो, निगेशन ट्रिक क्या होता है पढ़ लो, स्ट्रेंथनिंग कैसे करते हैं, वीकनिंग कैसे करते हैं, दैट्स इट. आप 85-90% क्वेश्चंस करके आओगे. बचे क्वेश्चंस जो होंगे ना डायरेक्ट होंगे. सपोज द रेशियो गोज डाउन, सपोज इन द एक्चुअल मॉक 70% क्वेश्चंस ही आते हैं इन पांचों टॉपिक से, नो प्रॉब्लम. 30% क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? पैरेलल लॉजिक, स्ट्रक्चर या डायरेक्ट क्वेश्चन. व्हेन द ऑथर सेज दिस, द मीनिंग इज दिस, दिस वर्ड इज यूज्ड इन दैट वे, तो मैनेज तो हो ही जाएगा ना. 70% काम तो फिर भी हो रहा है. तो आप ये वाली चीज़ जरूर कर लेना. एंड द एंटायर पेपर वाज मॉडरेट एंड देयरफॉर क्वेश्चन का लेवल भी इजी मॉडरेट ही था. मोर और लेस बिल्कुल इजी क्वेश्चन कोई भी नहीं था सच, राइट? ओके. नाउ इफ यू आर अ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, यू हैव बीन राइटिंग CR वेरी वेल, CR बहुत अच्छा करते हो, तो इसमें आपके अटेम्प्ट्स 20-22 तक गए होंगे, एक्यूरेसी 90% तक जा सकती है, बट स्कोर अराउंड डिपेंडिंग ऑन द अटेम्प्ट्स 80+% इज कंसिडर्ड अ गुड स्कोर. तो याद रखना एवरीवन, इफ यू आर हैव डन 18+ इन दिस, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है, बट दिस इज इन 25 मिनट्स. अगर 1 घंटा लगा के किया है तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं है. So before I move on, let me quickly ask you your score. Can you guys please tell me how much did you score in the section? Let me look at the chat everyone. जल्दी से बताओ सेक्शन में स्कोर कितना आया. हितेश, नो प्रॉब्लम. स्कोर करने से मतलब होना चाहिए, पैसेज हो ना हो वो बहुत बड़ी बात नहीं है. चलो लेट मी सी. 16.25, 30 minutes. अनन्या 13.25, 14,
हर्षवर्धन परसेंटाइल से शॉक मत हुआ करो, परसेंटाइल पोजीशन होती है आपकी, ओके। अगर बाकी लोग कम कर रहे हैं तो आपकी परसेंटाइल ज़्यादा अच्छी होगी, दैट्स इट। 9, देयर आर 2 अनन्यास, अच्छा अनन्या अग्रवाल 9.5, नंदना 15.2, 15.25 is very good because it's almost closer to what I had in mind. जया 16, तरणप्रीत तुमने 25 मिनट्स दिया था या कम दिया था? तंजिला 16.75, वेरी गुड, गुड स्कोर। 18 इज स्ट्रॉन्ग, राइट, सो 18 प्लस इज स्ट्रॉन्ग, तो अगर आप 16 करके आए हो इस पेपर में, बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया। हितेश 15, ओके हितेश, आई थिंक यू आर टारगेटिंग नॉट दिस ईयर क्लैट, राइट, तुमने लिखा था मेरे ख्याल से, वेरी गुड। सो सपोज you have done around 13 type marks, you still have done a good job, एवरेज प्लस का स्कोर है ये, बट अगर 9 या उससे कम के आसपास का स्कोर आपका आया है तो आप थोड़ा सा शायद इसके अंदर वीक हो प्रॉबेबली। बट इन लास्ट 1 वीक क्या करना चाहिए? कैन आई एक्सपेक्ट कि मैं पूरे की पूरे सीआर को दोबारा कर लूँगा और मैं इसमें 24 आउट ऑफ 24 लेके आऊँगा? नो, वी कैन स्टिल इम्प्रूव, 3-4 मार्क्स के इम्प्रूवमेंट फिर भी आ सकते हैं, राइट, बट ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट बाई 100%, 150%, probably not. 1 week before the exam, everyone, 1 week before the exam, एक्सेप्टिंग रियलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, सच्चाई मानना बहुत ज़रूरी होता है कि चलो ठीक है मैं इतना कर रहा हूँ तो मैं किसी और सेक्शन से कॉम्पनसेट कर दूंगा, बट मैं इस सेक्शन में इतना ही कर सकता हूँ। इट्स लाइक क्रिकेट, कि मुझे पता चल गया कि मैं यही कर सकता हूँ, मैं इतने रन बना सकता हूँ, बट मैं कॉम्पनसेट कर दूंगा, अच्छी फील्डिंग कर दूंगा या कुछ मोटिवेशन कर दूंगा या कुछ कर दूंगा, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा रहेगा। एक्सेप्टिंग दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर एवरीवन, दिस वाज अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर, तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आप 24 आउट ऑफ 24 उम्मीद करोगे, ऐसा नहीं है। 18 प्लस, 13 प्लस, 9 प्लस, आप इसके हिसाब से अपने आप को जज कर सकते हो, राइट। 25 मिनट्स तरणप्रीत, तो आपका स्कोर थोड़ा कम गया है। अच्छा हितेश, ओके, मुझे लगा आप अगले साल टारगेट कर रहे हो। Taranpreet, then probably there are two possibilities. One is you are slow, or second possibility is your accuracy is weak. Either way, Taranpreet, please don't put pressure on yourself. Attempts की speed मत बढ़ाना, ज़्यादा attempt करने की कोशिश मत करना, okay? जो आपको natural rhythm, remember everyone, natural rhythm is very important. Whatever you think is natural, जिस speed से आप करते हो ना, उसी speed से आप करना, वरना आपका score down हो जाएगा। आप जहाँ extra push लगाओगे in the last 1 week, your natural score will come down. So whatever is your natural rhythm, please maintain it, push mat karna. One very important piece of advice, correct? Now something more very important point अभी बताने वाला हूँ। टाइमिंग तो पता ही है आपको, 25 मिनट से ऊपर हम जाते नहीं हैं, राइट। ना इफ यू आर अ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, आप शायद सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते थे। फॉर एग्जांपल द लास्ट पैसेज वाज वेरी इजी, क्वाइट डूएबल, है ना। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आपको लगता है मैं 15-16 मार्क्स ही कर पाता हूँ, तो 7 to 24 में आपको आपको क्वेश्चंस करने चाहिए थे। फर्स्ट 6 प्रॉबेबली आप छोड़ सकते थे, बट छोड़ने वाले क्वेश्चन तो ऐसा कोई नहीं था, बट इफ़ यू आर अ वीक स्टूडेंट देन प्रॉबेबली फर्स्ट 6 क्वेश्चन मुझे लगा छोड़ सकते थे, और मे बी द वुल्फ वाला पैसेज भी हो सकता था, मुश्किल था, डिपेंडिंग। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। 1 week before the exam, this becomes very important. I hope this is very clear in your head. Everybody is very very clear about it, that आपको रैंक स्कोर से मिलती है, ना कि अटेम्प्ट से। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। आप 150 अटेम्प्ट करके आओ, 120 अटेम्प्ट करके आओ, 2000 अटेम्प्ट करके आओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अनलेस दैट ट्रांसलेट्स इनटू स्कोर ऑल्सो, बराबर। सो दिस इज अंडरस्टूड। नाउ वी हैव दिस माइंडसेट दैट अगर मैं सीआर कर रहा हूँ और पैसेज गिवन है, तो मेरा काम है आई हैव टू रीड एवरीथिंग इन द पैसेज, देन आई हैव टू गो टू द क्वेश्चंस, एंड फिर क्वेश्चन को पढ़ूंगा, फिर पैसेज में आऊँगा, फिर पूरी कहानी चलेगी बढ़िया से, मूवी थिएटर टाइप, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खाएंगे, फिर कहानी खत्म होगी। बट जस्ट इमेजिन यू आर अ लॉयर टुमारो, if you have seen any average good lawyer they go through, like, files after files after files of information every day.
तो वो हर चीज़ को मज़े लेके नहीं पढ़ सकते, लिटरेचर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते कि सोफे पे लेट के पढ़ रहे हैं. They have to have the mindset that I have to read and find out the relevant information. So that is why, remember everyone, this is very very important. आपको रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट चाहिए, यू नीड इट, बट मोर इंपॉर्टेंटली यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. क्या पूछा जा रहा है? इफ यू अंडरस्टैंड, यू कैन आंसर क्वेश्चंस much better, faster. And of course you have to eliminate. I have talked about it earlier also, like 2000 times. आप मुझे ये मत बताओ आंसर ए क्यों है, आप मुझे बताओ बी, सी और डी क्यों नहीं हो सकता. एंड ऑफ द स्टोरी. एंड लास्ट, प्लीज पिक एंड चूज इवन इन सी आर. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आज, बिकॉज यू गाइज कैन यूटिलाइज द टाइम लेटर फॉर सम अदर पर्पसेस. मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ. ओके, देखो, आई जस्ट शो यू रैंडम एग्जाम्पल्स. ठीक है, इस क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं. ओके, इट सेज which of the following if true. Now the moment it says if true, everyone ध्यान से देखना, the moment it says if true, I don't have to go to the passage, right? No need to go to the passage. Correct? Because I have to assume everything is true. Now, if you have read the passage once, you already know what the passage's main idea is. जैसे ये वाला जो पैसेज था, इट वॉज टॉकिंग अबाउट हाउ सेल फोन कैमराज हैव मेड द वॉर्स ऑलमोस्ट नॉट सो इंटरेस्टिंग, ऑलमोस्ट नॉन शॉकिंग. इतने फोटोज देखते हैं लोग कि वॉर में शॉक होना ही बंद हो गया है. Now look at this question. It says which of the following if true would strengthen the author's argument. अब ये नहीं कहता argument, it also tells you what argument. Argument about the unique impact of aerial shots in the depicting disaster as represented in the passage. The question is telling you answer क्या होना चाहिए. Question is saying support the argument about unique impact of aerial shots in depicting disaster. If the question is saying, everyone, if the question is saying aerial shot की unique impact के बारे में कौन सा option उसे strengthen करेगा, तो मेरा आंसर किसके बारे में होगा? My answer will be about unique impact of aerial shots. Aerial shots के unique impact के बारे में कुछ होना चाहिए. Correct everyone? Is the question clear? अब options पढ़ के बताओ किस option में आपको लगता है author कह रहा है कि भाई aerial shots में कुछ unique बात होती है. Can you guys please read it and tell me? एरियल शॉट्स में यूनिक बात होती है, कौन सा ऑप्शन कह रहा है? जरा एक बार लेट्स ट्राई इट. हो सकता है हम गलत भी कर दें, बिकॉज यू गाइज आर नॉट रीडिंग द पैसेज राइट नाउ, बट ट्राई करके देखते हैं, है ना. नंदना, आई होप दिस विल हेल्प यू. हितेश, बिल्कुल सही बात. जस्ट ट्राई इट एवरीवन, इवन इफ यू डोंट रिमेंबर द पैसेज, इट्स ओके. मुझे भी याद नहीं है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ जस्ट टू शो यू हाउ टू थिंक अबाउट इट. थोड़ा सा सोचेंगे अलग तरीके से. Which of the following is telling you something nice, good thing about aerial shots? अब देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं. ओके, एरियल शॉट्स हैव बीन वाइडली अडॉप्टेड बाय प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स, यानी कि कुछ कुछ ठीक ठाक तो कह रहा है, बट यहाँ पे यूनिक इम्पैक्ट, इसमें इम्पैक्ट दिख रहा है क्या? एबिलिटी तो दिख रहा है, इम्पैक्ट दिखा कुछ? जस्ट लुक एट द वर्ड्स गाइस. आई हैव टू लुक फॉर इम्पैक्ट. This one is talking about ability. Okay. Availability and accessibility of drones. Increase use. Where is the impact? दिख नहीं रहा. Viewers are more likely to share and discuss aerial shots on social media. Greater public awareness of catastrophic events. थोड़ा impact दिख रहा है. But unique? एकदम हटके? Not so much. Study found that viewers are more likely to be emotionally affected by aerial shots than by cell phone videos or surveillance camera footage. यहाँ पे emotional impact की बात हो रही है. Now suppose I don't even know what the passage is talking about much. मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया, मुझे मुश्किल लग रहा था. Like Nandana felt it was hard. I still can take a chance.
क्वेश्चन इज सेइंग इम्पैक्ट, क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट एरियल शॉट्स, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा ना, मैं बोलूँगा यार ये तो जनरल सा है, दिस वन इज ऑल्सो वेरी जनरल, दिस वन इज impact but unique, not much, but this is about emotional impact. I will take a chance with option D. That's it. I hope this is clear, everyone. सवाल को ढूंढो. You may have seen this, right? देखा होगा कहीं और सुना होगा, है ना? सवाल को समझो. अगर आप CR करना चाहते हो, every single thing in CR can be helpful. You did not understand the passage much. Main idea तो पल्ले पड़ा होगा. Now understand, if you understand what is the answer for a strengthening argument, then weakening argument also becomes easy. इसमें क्या रहा है, यूनिक इम्पैक्ट एरियल शॉट का नहीं होता है. फाइंड एन ऑप्शन जो कहता है कि एरियल शॉट में कुछ यूनिक नहीं होता, तो उल्टा सोचना पड़ेगा. समथिंग बैड अबाउट एरियल शॉट्स, that will help you with the answer. You understand? Thinking. CR is all about thinking, right? Let me give you another example. Best describes the structure of the passage. Structure of the passage question आया ना, please attempt. Always quite doable. In structure questions, always compare options. The passage introduces the concept of modern war footage. The passage describes the repetition of cell phone footage. The passage begins with an analysis of cell phone footage and its desensitizing effects. The passage discusses the nature of war footage. आप यही से एलिमिनेशन कर सकते हो. You can go back and check कि फर्स्ट पार्ट में किसकी बात हो रही है. Is it introducing the concept of modern war footage? ये बता रहा है, या repetition of cell phone footage बता रहा है, या एनालाइज कर रहा है सेल फोन फुटेज का, या डिस्कस कर रहा है नेचर ऑफ वॉर फुटेज. सी हाउ डिफरेंट दे आर. वॉर फुटेज, मॉडर्न वॉर फुटेज, रिपीटेशन ऑफ सेल फोन, एनालिसिस ऑफ सेल फोन. दिस कैन हेल्प यू एलिमिनेट आंसर्स वेरी वेरी इजीली. करेक्ट. तो स्कोर करने में फोकस करना है आपको. अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे इन द लास्ट 1 week, यू कैन डू दिस. जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस अ फ्यू मोर क्वेश्चंस. Read the question properly, understand the main idea and try repeatedly. Correct. Suppose you understood the main idea of this passage. Main idea ये था पैसेज का कि भैया सुप्रीम कोर्ट का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फालतू के सवाल मत पूछो सुप्रीम कोर्ट में. एंड सेकेंड, whether a policy is good or bad, this is not सुप्रीम कोर्ट्स डोमेन. कोई पॉलिसी अच्छा है कि बुरा है ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करता. सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि लीगल है कि इलीगल है. कॉमन सेंस. सपोज आई गो एंड टेल सुप्रीम कोर्ट दैट यू नो द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ पॉलिसी वेयर फार्मर्स विल बी गिवन ट्रैक्टर्स. आई थिंक इट्स अ बैड पॉलिसी योर लॉर्डशिप. बेकार पॉलिसी है, तो इससे तो फार्मर्स काम नहीं करेंगे, तो ट्रैक्टर में काम करेंगे. बैलों का क्या होगा, बैल बेचारे क्या करेंगे. सुप्रीम कोर्ट विल से हैव यू लॉस्ट योर माइंड. दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तुम बताओ ये इलीगल है क्या? इज गवर्नमेंट ब्रेकिंग एनी रूल? इफ यस, टेल अस व्हिच रूल, विल टेक अ कॉल. अदरवाइज अपना कुछ काम कर लो तुम भी जाके. बैल तक अब काम कर रहा है, तुम भी कुछ कर लो यार. राइट. दिस इज व्हाट द पैसेज वाज टॉकिंग अबाउट. इफ यू अंडरस्टूड दिस, तो क्वेश्चन करना रिलेटिवली काफी आसान हो जाता है. रिप्रेजेंट्स द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है भैया? हम नहीं बताएंगे गुड है कि बैड है, हम बताएंगे लीगल है कि इलीगल है. करेक्ट. क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, रिसोर्स भी कम है, जजेस भी कम है, टाइम भी कम है, इतने कोर्ट केसेस लदे हुए हैं, है ना. तो उसके हिसाब से आप आंसर कर सकते थे. सपोज यू अंडरस्टूड दिस. अब क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन कहता है वीकन द आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड इन द पैसेज. अब सोचो आंसर क्या होगा. सुप्रीम कोर्ट सेज हम पॉलिसी गुड है बैड, नो वी कांट डिसाइड. वी कैन डिसाइड वेदर इट्स लीगल और इलीगल. वी हैव लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड टाइम. वीकन करो. Supreme Court has all the time in the world. Supreme Court has all the resources in the world. Supreme Court can decide if something is good or bad. Supreme Court does not decide what is legal or illegal. Which option? Can you guys just read and tell me? अगर नहीं भी किया है तो भी आंसर बता सकते हो क्या? कहाँ पे ऐसा लिखा है? Let me see everyone. अनन्या अग्रवाल, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखो ऐसे सोचना है. अगर आप ये कर पा रहे हो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो आप जाने दे सकते हो. ओके.
Just answer everyone quickly. D. अनन्या अग्रवाल, यू नीड स्टेमिना. आपका स्टेमिना का इशू है, आप फोकस लूज कर जाते हो. ठीक है, तो बैक टू बैक मॉक्स देके देख सकते हो. ट्राई टू मॉक्स बैक टू बैक. एक मॉक दो, 5 मिनट का ब्रेक, एग्जैक्टली 5 मिनट का ब्रेक, देन टेक अनदर मॉक, फिर देखो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम. डी. चलो लेट मी रीड डी. The Supreme Court's role includes reviewing and evaluating government policies to ensure they are legal and beneficial to the masses. Beneficial का मतलब है कि अच्छा है कि बुरा है. लीगल तो चेक करना ही है, ये भी चेक करना है कि भैया अच्छा है कि बुरा है. यानी जो सुप्रीम कोर्ट पहले कह रही थी सब गलत बोल रही थी, है ना. यानी कि आंसर डी होना चाहिए. सही है, डी बिल्कुल सही, शाबाश. सो वंस यू अंडरस्टैंड इट, क्वेश्चंस आर सो इजी. यस और नो. याद रखना एवरीवन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेन मुद्दा पकड़ो. लास्ट के 7-8 डेज, टेक अप एनी पैसेज, रीड, फाइंड आउट द मेन आइडिया. You can easily do conclusion, easily do assumption, easily do strengthen and weaken. ये 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी. और डायरेक्ट वाले वैसे भी कर सकते हो. पैरेलल्स द लॉजिक एम्प्लॉयड इन द पैसेज. पैसेज कहता है सुप्रीम कोर्ट अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट का टाइम बहुत लिमिटेड होता है. सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर सकती कि क्या पॉलिसी अच्छी है क्या बुरी है, बट ये डिसाइड कर सकती है कि लीगल है कि इलीगल है. सुप्रीम कोर्ट, राइट. सेम लॉजिक कहाँ पे है? सिटी काउंसिल, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, पेरेंट. इनमें से कौन सा लग रहा है तुम्हें सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट है? पेरेंट को बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट? वैसे हमारे लिए होते हैं, इंडिया में स्पेशली, है ना, जूता वूता मार देते हैं, किसी से भी शादी करवा देते हैं, कुछ भी करते हैं, बट ठीक है, पेरेंट से प्यार भी करते हैं थोड़ा. तो ये पेरेंट है, इज नॉट सम इंस्टीट्यूशन आउट. बिजनेस एग्जीक्यूटिव, सिंगल पर्सन, नॉट सम काइंड ऑफ public institution, out. University professor, another employee, not social institution or political institution. City council, quite similar. हो गया आंसर. अरे मुझे अगर मार्क्स कमाने हैं ना, मैं मार्क्स ऐसे कमा सकता हूँ, बट हमारा माइंडसेट क्या होता है एवरीवन? माइंडसेट इज कि मैं पहले पैसेज पढ़ूंगा, फिर क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर आंसर ढूंढूंगा जाके. बीच में प्री थिंकिंग करना होता है. यू हैव टू थिंक बिफोर यू लुक एट द ऑप्शंस. 10 seconds थिंकिंग, दैट इज व्हाट लैक्स. वही पे हम मार खा जाते हैं. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. नवीन कह रहा है इन्फेरेंस वाले क्वेश्चन में कंक्लूजन देना होता है. नवीन तुम ये सवाल अभी पूछ रहे हो तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गया हूँ. इन्फेरेंस का मतलब क्या होता है एवरीवन? इन्फेरेंस का मतलब होता है, इन्फेरेंस का मतलब होता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज the option should be is likely to be true. इन्फ्रेंस का मतलब समझ लो. इन्फ्रेंस का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये सही होना चाहिए, इट इज लाइकली टू बी ट्रू. 100% हो ना हो, 90%, 99% तो रहता है चांस. इसे बोलते हैं इन्फेरेंस. इन कंक्लूजन इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. इन्फेरेंस कैन फ्लो फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द पैसेज. मान लो first line of the passage says monkeys are found only in Africa. Inference में लिखा है, question says which of the following is an inference? Option 1 says monkeys are not found anywhere else in the world apart from Africa. Correct है, first line से आ गया. But if I say which of the following is a conclusion, अब ऑप्शन में आ जाएगा तो क्या ही करूंगा, मार्क तो करना पड़ेगा. बट दिस इज नॉट रियली अ कंक्लूजन. कंक्लूजन is always from bigger part of the passage or the entire passage. पूरे पैराग्राफ का कंक्लूजन हो सकता है, पैसेज का कंक्लूजन हो सकता है. सिंगल लाइन से हम इन्फ्रेंस निकालते हैं मोटा मोटा, राइट. नाउ दिस पैसेज वाज हार्ड रिलेटिवली, राइट, बट इफ यू अंडरस्टूड द पैसेज तो ये भी करना आसान था. बट इफ यू आर टारगेटिंग क्लैट एंड इफ यू डिस्कवर दैट देयर इज वन पैसेज आई एम नॉट एबल टू हैंडल, छोड़ दो ना. आप उसमें बाद में आना इन द 25 मिनट्स टाइम स्केल, अगर आप आ सकते हो तो, अदरवाइज आप छोड़ दो. करेक्ट. But this passage, if you understood what the passage was saying, it was not that hard. कर सकते हैं. And elimination of course is the idea. Elimination तो करना ही है. Now look at this one. ये बड़ा ही interesting passage था. कहता है कि भैया इतने लाइफ थ्रेटनिंग एंग्जाइटीज होते हैं कोविड के,
उसमें लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल जो है ना वो कोई बॉदर ही नहीं करता, बट सच एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। स्मेल और टेस्ट चला जाएगा तो ज़िंदगी में क्या बचेगा? ना खाने को मज़ा आएगा, ना अपना कुछ स्मेल करके मज़ा आएगा, अपना परफ्यूम का फ़ायदा, ना खाना ख़राब है कि अच्छा है पता चलेगा। विदाउट स्मेल यू कांट रियली फिगर आउट taste. So this talks about that, and it also talks about the related problems faced by patients. तो understand the point. The point is एक पैसेज बहुत मुश्किल था, आप उसको करने लग गए एंड यू गॉट स्टक, 10 मिनट निकल गए उसमें, एंड देन यू रियलाइज मेरे से हो नहीं रहा। व्हाट्स द पॉइंट? आपको लगता है यू हैव अ लुक एट द पैसेज 1 2 3 लाइन्स, यू थिंक नहीं हो रहा, छोड़ दो, अगले पैसेज पे चल जाओ। आउट ऑफ 6 or 5 or 4 whatever number of passages you get, there will always be some doable passages. कुछ doable passages हमेशा मिल जाते हैं, तो आप उन पे हमेशा फोकस रखो। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन, है ना? सो अब इसमें आपको एक दो इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता हूँ। जैसे इन्फेरेंस पूछा किसी ने, है ना? अभी किसी ने पूछा था इन्फेरेंस, नवीन ने कहा था इन्फेरेंस क्या होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है एवरीवन? नवीन अंडरस्टैंड, इट बेसिकली मीन्स that 4 options are given. All these 4 options, not all, one of the 4 is likely to be true based on the information in the passage. बराबर? पैसेज के हिसाब से इनमें से कोई एक सही है। अब ऑप्शन 1 पढ़ो। People regard the sense of taste and smell as trivial to our lives. लोग सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल को छोटी बात मानते हैं। अब चलो रेलेवेंट पोर्शन पे जल्दी से। पैसेज कहता है amid the many life threatening anxieties of COVID-19, symptoms like loss of taste and smell often get dismissed as trivial. कौन कर रहा है डिसमिस? डॉक्टर्स कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा। तो इज इट लाइकली टू बी ट्रू? प्रोबेबली नॉट। कोई नहीं, अगला ऑप्शन देखते हैं। The loss of the sense of taste and smell is not life threatening. अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे, पूरे पैराग्राफ में ये लिखा है कि भैया सेंस ऑफ लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल से ना जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ना आपसे खाया जाता है, ना पिया जाता है, आप इमोशनली डिप्रेस्ड रहते हो, आपको बदबू आती है चीज़ों से। बट कहीं ये नहीं लिखा कि इससे आपकी जान पे खतरा हो जाता है, आपको आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है, लोग आपके लिए दुआएं मांगते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये वाला लग रहा है, ये कहीं ज़्यादा सही होने के चांसेस हैं। ये वाले में तो डाउट आ गया था। ट्रिवियल कौन मानता है? डॉक्टर्स, कुछ लोग, सारे लोग। बट इसमें तो मज़ा आ गया, ये तो सही लग रहा है, बहुत बढ़िया। द लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल वुड बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस इफ दे हैड बीन लाइफ थ्रेटनिंग। लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट अगर जिंदगी में बात बनाती तो उसको ज़्यादा इज्जत मिलती है। पैराग्राफ ने कहाँ बोला ऐसा? कोई इन्फॉर्मेशन है सपोर्ट करने के लिए? ये तो बेकार ही है, निकालो इसको। टेस्ट एंड स्मेल डू नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ। भाई साहब ऑथर ने पूरी किताब लिख दी इसके ऊपर, पूरा पैसेज लिख दिया है, तो रोल ही सिग्निफिकेंट प्ले नहीं करता तो ऑथर क्या कर रहा था बेचारा? इससे अच्छा तो ऑथर चने बेच लेता। द ऑथर रोट an entire passage on this and you are saying it's not significant. क्या बकवास है ये तो हो नहीं सकता। अब फर्स्ट वाला डाउटफुल था, सेकंड वाला काफी अच्छा लग रहा था, तो लेट्स टेक अ चांस विद सेकंड। हो गया आंसर। इसे बोलते हैं इन्फेरेंस। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर एवरीवन। तो जल्दी जल्दी से करते हैं खत्म आज के ताज़ा समाचार, राइट? तो हमने क्या सीखा एवरीवन? 2-3 पॉइंट्स बिफोर आई लेट यू गो एंड द नेक्स्ट फैकल्टी टेक्स ओवर। एक बार चेक कर लूं आपके नेक्स्ट फैकल्टी तैयार हैं कि नहीं। चलो बिल्कुल तैयार हैं। तो लेट मी जस्ट क्विकली समराइज एवरीथिंग एवरीवन। क्लैट में याद रखना अपने को करना है स्कोर, राइट? आपको अटेम्प्ट्स के कोई मार्क्स नहीं देगा, अटेम्प्ट्स के कोई मार्क्स नहीं मिलते। अटेम्प्ट करने वालों को कोई नहीं जानता है ना, जो माउंटेन के टॉप पे पहुंचता है उसको जानते हैं। हिलरी को जानते हैं, तेंजिंग को जानते हैं क्योंकि माउंट एवरेस्ट के टॉप पे पहुंचे थे। मैलरी जिनकी डेथ हो गई थी उनको लोग नहीं जानते। सेकेंड, स्कोर करने का मतलब होता है रीड द पैसेज, अंडरस्टैंड द मेन आइडिया। 4 साल से मैं लिख रहा हूँ क्लैट एंड आई टेल यू फ्रॉम एक्सपीरियंस, if you get the main idea of the passage correct, you will get all questions correct in CR.
एंड इफ यू थिंक अ पैसेज इज समथिंग यू कांट हैंडल, नहीं हो रहा हैंडल, तो छोड़ दो, नहीं होती इंजीनियरिंग छोड़ दे, याद है 3 इडियट्स वाला डायलॉग, छोड़ दे, कोई बात नहीं, है ना। नहीं हो रहा पैसेज, वुल्फ मैथमेटिक्स दिमाग खराब करा, छोड़ दो यार, अगला देखो कोविड वाला पैसेज, कितना बढ़िया पैसेज है, वो कर लो। अल्टीमेटली मार्क्स चाहिए अपने को, मार्क्स, क्योंकि मार्क्स ही आपको आपका हक दिलाएगा, करेक्ट। तो स्कोर करना है, पिक एंड चूज। एक पैसेज में सारे क्वेश्चंस हो जाएं जरूरी नहीं है, कोई एक क्वेश्चन नहीं हो रहा वो भी छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है, राइट। तो आपको जाना है, अटेम्प्ट करना है पूरा का पूरा आपको क्लैट, और वापस आके आपको ज्वाइन करना है हमें, क्योंकि हम लेके आएंगे आपके लिए डिटेल्ड एनालिसिस, कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स, डिफिकल्टी लेवल जितना हो सकता है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, कॉलेजेस वगैरह, तो डोंट मिस इट। एंड द नेक्स्ट फैकल्टी विल टेक ओवर नाउ, सो आई विल हैंड इट ओवर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीबडी। रात के 9 बजे वी आर मीटिंग फॉर क्रैश कोर्स वंस अगेन। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। ऑडिबल एंड विजिबल, और अगर स्विच करते टाइम किसी को मैं ऑडिबल विजिबल नहीं हूं तो प्लीज रिफ्रेश इट वंस अगेन। जितने भी लोग हैं यहां पर तो प्लीज डू रिफ्रेश इट वंस अगेन। एक बार सब लोग रिफ्रेश कर दीजिए फटाफट से। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जिन लोगों को भी मैं विजिबल नहीं हूं, ऑडिबल नहीं हूं, तो प्लीज रिफ्रेश वंस अगेन। आई विल बी विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम। बहुत टाइम बाद हम गुड आफ्टरनून में फिर से मिल रहे हैं, अदरवाइज वी यूजुअली मीट इन द गुड इवनिंग टाइम, राइट। सो क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो फोर्थ ऑल इंडिया ओपन मॉक एनालिसिस चल रहा है, 3 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, 3 फैकल्टी हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ, और अब हम आ गए हैं चौथे सेशन पे, जो सबसे हॉन्टिंग हो जाता है कभी कभार, दैट इज योर क्वांट सेशन। क्वांट को देख करके सर कभी कभी डर लग जाता है, तो देखेंगे इस मॉक ने डराया या इस मॉक ने हंसाया, या इस मॉक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस सेशन, बट उससे पहले एज अवर टीम इज सेइंग, यार लाइक वाइक कर दो, शेयर कर दो, ये तो करना ही होता है ना, दिस इज मैंडेटरी। तो लाइक वाइक करना स्टार्ट कर दो एंड लेट्स क्विकली बिगिन द सेशन। बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि यार क्या करना था क्या नहीं करना था, ये कैसे करना था, वो कैसे करना था, ये क्यों नहीं करना था, ये क्यों करना था। ऑल द थिंग्स विल डिस्कस हियर इन दिस सेशन, ठीक है। बट सेशन शुरू करने से पहले आई वांट टू टेल यू वन थिंग। क्या वन थिंग है भाई, कि डोंट फॉरगेट वंस अगेन अ रिमाइंडर, क्रैश कोर्स अभी भी चल रहा है ना भाई, यूट्यूब के ऊपर में 9 बजे डेली क्लासेस हो रही हैं, गो एंड वॉच दोज क्लासेस ऑल्सो। स्केयर्ड, देखते हैं भाई। तो चलते हैं फटाफट, लेट्स मूव ऑन टू क्वांट एनालिसिस, जहां पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, जिन लोगों को, जो लोग यहां पर खाली सॉल्यूशन देखने आए हैं सारे तीनों सेट के, उनको मैं बता दूं भाई, सॉल्यूशन में ऑलरेडी रिकॉर्ड करके अपलोड करवा चुके हैं, ठीक है। यू कैन गो एंड वॉच द सॉल्यूशन ओवर देयर, मैंने ही रिकॉर्ड करे हैं, राइट। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सर क्वांट में एक्यूरेसी इज मोर देन 80%, 100% होनी चाहिए। क्वांट में तो आता है या नहीं आता, गलत क्यों हो रहे हैं, गलत नहीं होने चाहिए यार क्वांट में। क्वांट का यही तो फायदा है कि क्वांट में हमारा कुछ भी गलत नहीं होता है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट यार। तो सॉल्यूशन में यहां पर नहीं प्रोवाइड करवाऊंगा क्वेश्चंस के कि मैं पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, उससे ज्यादा मैं डीप डाउन जाऊंगा क्वेश्चंस में कि यार इसमें क्या करना था क्या नहीं करना था। सॉल्यूशंस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, आप जाकर के वहां पे देख सकते हो मॉक एनालिसिस पार्ट में। चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहले इसको जरा कंपेयर करते हैं मॉक 21 के क्वांट को विद द प्रीवियस ईयर क्लैट्स, क्लैट 2020, 21, 22, 23। सर 2020 से ही क्यों शुरू करते हो, बिकॉज 2020 में पैटर्न चेंज हुआ था, इस बार फिर से चेंज हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर हो जाता है 2020 हमारे लिए। जब पैटर्न चेंज हुआ था उस साल ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, वन सेट वाज बेस्ड ऑन ग्राफ, इसीलिए हमने भी एक सेट ग्राफ बेस्ड दिया है यहां पर। तो आपके पास यहां पर भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, बिकॉज 2020 में भी आया था, लेकिन बीच के सालों में नहीं आया। अब जब बीच के सालों में नहीं आया, आप सब लोग जानते हो कि क्वांट में, क्लैट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम। वो तो करता ही वो है कि कोई प्रेडिक्ट ना कर पाए, तो इसका मतलब लोगों को लगेगा यार सिर्फ केसलेट ही तो आती है, तो केसलेट की तैयारी करते हैं, काहे को ग्राफ करना है, नो नीड टू डू एनी ग्राफ्स।
बट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दे माइट गिव यू ग्राफ दिस ईयर एज अ सरप्राइजिंग एलिमेंट। जो 3 साल से नहीं किया है वो इस साल बिल्कुल कर सकते हैं। ये बीच में इन्होंने गैप दिया था और क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है तो फिर से एक चांस है। तो इसलिए अगर अभी तक भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करे, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, 2-2 ग्राफ भी कर लोगे हो जाएगा काम। पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, ये सारे ग्राफ्स एक बार आप लोग कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, क्या कह रहे हो सर? टाइम 20 मिनट्स लग गया था, कोई बात नहीं, 20 मिनट्स है, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना है। अभी डिस्कस करेंगे, टाइम पे भी चलेंगे, कितना टाइम आइडियली लगना चाहिए, कितना नहीं लगना चाहिए, विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। ठीक है, आई एम प्रिपेयरिंग बट माई एक्यूरेसी इज 50 to 65%। बेटा काम करो, वर्क ऑन योर एक्यूरेसी। देखो, एनालाइज करो मॉक्स जब देते हो कि यार कहां पे गड़बड़ कर रहे हो, क्यों एक्यूरेसी डाउन हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं लेवल की बात करूं तो इट वाज इजी टू मॉडरेट लेवल, मुझे डिफिकल्ट नहीं लगा कहीं से कहीं तक भी। हो सकता है आपको लगा हो, आप मुझसे डिसएग्री करें, यहां पर देखेंगे। अभी बताइएगा अगर कुछ मुश्किल लगा है, जिन लोगों ने भी अटेम्प्ट किया है। तो फटाफट से क्लैट 2023 के साथ डिटेल कंपैरिजन कर लेते हैं इसका। क्लैट 2020 में 3 सेट आए थे, यहां पर भी 3 सेट आए हैं, बट क्वेश्चंस कम हो गए हैं। 5 क्वेश्चंस थे वहां पे, हमने यहां पर 4 कर दिए। रीजन बीइंग कि टोटल क्वेश्चन 150 थे और यहां पे टोटल क्वेश्चन 120 हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंगली वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो परसेंटेज बेस्ड केसलेट आता ही आता है अर्थमेटिक, एक यहां पर भी था। ठीक है, एक बार ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था और एक वेन डायग्राम केसलेट है। तो अगर वेन डायग्राम का बेसिक अभी तक भी नहीं करा है, अभी भी टाइम है, गो एंड डू द वेन डायग्राम बेस्ड केसलेट। अगर कहीं से भी नहीं मिल रहा है, यूट्यूब पे टाइप करोगे अंकुर शर्मा सर, बायजूस, वेन डायग्राम क्लास, यू विल फाइंड द क्लासेस। ठीक है, 2-3 क्लास मिल जाएंगी मेरी, वहां पे जाके आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो वेन डायग्राम की, बहुत इंपॉर्टेंट है और आ सकता है इसके ऊपर एक सेट। तो इसीलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी आया है सेट, वहां पर भी आ सकता है। अब हम बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल की तीनों सेट की। परसेंटेज बेस्ड सेट तो बहुत इजी था, अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, दैट्स व्हाट आई थिंक। आप लोग शेयर करो अपना ओपिनियन, आपको कैसा लगा। मेरे हिसाब से तो इजी था। बार ग्राफ को मैंने इजी टू मॉडरेट क्यों रखा है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशंस थी, बाकी तो सब बहुत इजी था। उसके अंदर में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। ठीक है अनन्या, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वेन डायग्राम अगर नहीं हो रहा है तो जाओ प्लीज बेटा, मेरा नाम टाइप करोगे, टाइप बायजूस एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड द वीडियोस। एटलीस्ट 2-3 वीडियोस मिलेंगी, उनको गो थ्रू करो। ठीक है, पिछले साल की भी होंगी, इस साल की भी होंगी, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू इट। ओके, वेन डायग्राम की मैं बात करूं, इजी टू मॉडरेट मैंने क्यों रखा है, इजी सेट था। बट द प्रॉब्लम इज, कई लोगों को जैसे वेन डायग्राम में दिक्कत आ रही है या कई लोगों को वेन डायग्राम नहीं आता है, उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं कि यार मॉडरेट हो जाएगा जिनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं है। अदरवाइज द सेट वाज इजी, वो बिल्कुल इजी नहीं था, आर ट्रिकी, बट विद प्रैक्टिस इट बिकम्स इजियर। यस एग्जैक्टली, 4-5 सेट करोगे, फाइंड इट वेरी वेरी इजी। अब हम बात करते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे कि यार अगर मैं स्ट्रांग हूं तो मुझे कितने अटेम्प्ट करने चाहिए थे, एवरेज हो तो कितने चाहिए थे, वीक हो तो कितने करने चाहिए थे। इफ यू आर स्ट्रांग देन 10 to 12 अटेम्प्ट्स होने चाहिए थे। इफ यू आर एवरेज इन दिस सेक्शन 8 to 10, वीक हो तो 5 to 8 विद दिस मच एक्यूरेसी। क्यों मैं क्वांट में एक्यूरेसी इतनी ज्यादा रखता हूं बेटा, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। थैंक यू अनन्या फॉर लेटिंग पीपल नो दैट। ओके सो ठीक है जी, इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए यार। क्वांट में या तो चीजें आती हैं या नहीं आती है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो यार अगर हमने एक सेट में जा रहे हैं, दैट मींस वी नो दैट सेट, वहां जाके गड़बड़ कर रहे हैं, इसका मतलब कैलकुलेशन हमारी स्ट्रांग नहीं है। बहुत ज्यादा चांसेस है कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट चांस है कि वी स्पेंड, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, 100 करोड़ रुपए की बात है ये, कि वी स्पेंड मोर टाइम इन डेटा सॉल्विंग रेदर देन डेटा इंटरप्रिटेशन। इट्स नॉट डेटा कैलकुलेशन, इट्स डेटा इंटरप्रिटेशन। आप इंटरप्रिटेशन में ज्यादा टाइम लगाओ, आप क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ है, अच्छे से इंटरप्रेट किया है आपने, फिर सॉल्विंग में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, प्लस आपके गलती होने के चांसेस एकदम 0 हो जाएंगे। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दिस वुड हैव बीन द करस्पॉन्डिंग स्कोर्स आफ्टर द नेगेटिव मार्किंग एंड ऑल। टाइम कितना लगना चाहिए, अभी कुछ लोग बोल रहे सर 20 मिनट्स लग गए, 25 मिनट्स लग गए, 30 मिनट्स लग गए। आइडियली कितना टाइम लगना चाहिए था, अगर आप इस सेक्शन को अपना स्ट्रांग मानते हो तो 12 to 15 मिनट्स के अंदर में यू कुड हैव अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन। अभी भी अगर किसी को 20 मिनट्स लग रहे हैं, इट्स परफेक्टली ओके। अब जितने भी 2 या 3 मॉक देने वाले हो रिमेनिंग टाइम में, कोशिश करो कि अगले मॉक में 18 लगे, उसके अगले में 17, 16 तक भी पहुंच जाते हो, वेल एंड गुड। ठीक है, ट्राई यही करना है। एवरेज हो तो 8 to 10 मिनट्स लगने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस भी कम करोगे। राइट, एवरेज हो तो ऑब्वियसली यू आर अटेम्प्टिंग ऑलमोस्ट 8 to 10 क्वेश्चन। छोड़ क्या सकते थे अगर एवरेज हो तो,
या तो बार ग्राफ के जो एक दो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है वो छोड़ सकते थे, या वेन डायग्राम छोड़ सकते थे इफ यू डोंट नो द बेसिक्स ऑफ वेन डायग्राम। ऑल्दो द सेट वाज वेरी इजी, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आती है आप जाकर सॉल्यूशन देख सकते हो, मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। और परसेंटेज का सेट तो करना ही करना था, राइट। इन दोनों में से एक चीज करनी थी, ये करना था। तो 2-3 क्वेश्चंस ऑफ बार ग्राफ मैक्सिमम छोड़ सकते थे जो आपको लग रहा है कि यार कैलकुलेटिव है या कुछ कुछ है। अगर वीक हो तो परसेंटेज का सेट तो फिर भी करना था, वो बहुत ही इजी था। छोटी सी टेबल बनानी है, 4 लाइन की टेबल बनानी थी, उसके अंदर ऑल द क्वेश्चन वुड हैव बीन इजी। एंड एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ बार ग्राफ तो करने थे, 2 to 3 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इजी थे। डायरेक्ट ग्राफ में से उठा के पॉइंट्स रखने थे यार, उतना तो कर ही सकते थे। 3 to 4 मॉडरेट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन बार ग्राफ के या वेन डायग्राम का सेट इफ यू डोंट नो द बेसिक्स ऑफ वेन डायग्राम आप छोड़ सकते थे इफ यू आर वीक इन दिस। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि यार वेन डायग्राम का बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो। अनन्या भी यहां पे बता रही है कि मैंने अभी अभी सेशन लिया है, यू कैन गो एंड टेक दैट सेशन। और बार ग्राफ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है, ठीक है सर। सेक्शनल्स में एक्यूरेसी 100% है, बस मॉक्स में 80% हो जाती है। बेटा ये होता है टाइम प्रेशर, देखो घबराना नहीं है, मॉक ही दे रहे हैं, डोंट वरी, जस्ट गिव योर 100%। देखा इंडिया के साथ भी ऐसा हुआ था कि इंडिया भी पैनिक कर गई कि ऑल द टीम वाज वेरी गुड। तो पैनिक नहीं करना है, उस 2 घंटे में जितना आता है ना, देखो अभी आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली है, अब इसके साथ साथ ना अब इस पढ़ाई को आपको एग्जीक्यूट करना है। लर्निंग तो बहुत आ गई है, आप बिल्कुल ही लर्नेड हो चुके हो इतनी लर्निंग कर करके, ठीक है, पढ़े लिखे आदमी हो चुके हैं, लेकिन द पॉइंट इज कि इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, इसको डिलीवर नहीं कर पाए तो फायदा नहीं है। तो अपनी नर्व्स को काम डाउन रखना है। इस लास्ट 10 डेज के अंदर में आपका टारगेट होना चाहिए, जितने भी 9-10 डेज बचे हुए हैं आपके पास में, कि यार थोड़ा सा शांति के साथ में रहूं, मैं थोड़ा सा अपने हेल्थ पे फोकस करना बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जहां भी बच्चे मिल रहे हैं उन सबको समझा रहा हूं कि हेल्थ पे ध्यान रखो। इफ यू आर नॉट 100% फिट यू कांट डू 100% इन द एग्जाम। प्लस ये समझो कि यार फर्स्ट मिनट से लेके लास्ट मिनट तक मुझे अपना बेस्ट देना है, कुछ और नहीं सोचना इधर उधर हर मॉक के अंदर में, देन डेफिनेटली द एक्यूरेसी विल आल्सो इंप्रूव। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस नाउ। एक बार जरा क्वेश्चंस पे नजर मारते हैं, क्या सेट्स आए थे सर। ये था आपका परसेंटेज वाला सेट। अब देखो कितना ही इजी सेट है, कितना ही इजी कैलकुलेशंस है। इफ यू लुक एट दिस सेट, 400 गेस्ट आर इनवाइटेड, ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल का रेशियो इजीली दिया हुआ है। तो कितने मेल होंगे 3/8 ऑफ 400 और कितनी फीमेल्स होंगी 5/8 ऑफ 400। इजी कैलकुलेशंस, राइट। So 8 5s are 40, this become 150. So 8 5s are 40, this become 250. तो इजीली आ गया। कैलकुलेशन भी बहुत इजी है, पैराग्राफ बहुत इजी है, इजी टू रीड पैराग्राफ है, फटाफट से टेबल बन जाएगी, फटाफट से यू विल गेट ऑल द थिंग्स। उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे जंप करना था। इसीलिए मैं बोल रहा था दिस वाज द इजीएस्ट सेट, जहां पर बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने ही नहीं है। द गेस्ट लाइक चाइनीज, इटालियन और बोथ क्यूजिन्स। 12% ऑफ द मेल्स लाइक ओनली चाइनीज मेल निकाल सकते हो। 22% ऑफ द फीमेल्स लाइक ओनली इटालियन, टोटल फीमेल पता है निकाल लोगे। 24% ऑफ द टोटल गेस्ट लाइक ओनली चाइनीज। अब आपको ना टेबल बनानी है, ठीक है। अब पार्थ बेटा अभी मैं करूंगा, अभी इस सेशन के बाद करूंगा। अभी इसमें 2 दिन नहीं हो ना, 2 दिन के तक जो बच्चे रिप्लाई करते हैं मैं उनको रिप्लाई करता हूं, तो इसीलिए अभी मैं कर दूंगा आज, ठीक है। आज 2 दिन होंगे उसके, तो उससे पहले मैं कर दूंगा डेफिनेटली पार्थ। आई रिप्लाई ओवर देयर बेटा, डोंट वरी, ठीक है भाई। तो ये सेट बहुत इजी था। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं सॉल्व करके रिकॉर्ड करके अपलोड करवा चुका हूं, जाकर के वहां पे मॉक में देख सकते हो। यू विल फाइंड द सॉल्यूशन आल्सो फॉर दिस सेट। बहुत ही, अब उसके बाद में हाउ मेनी मेल्स लाइक चाइनीज, उसमें आप आंसर बता सकते हो इजीली, सी होगा। हाउ मेनी गेस्ट लाइक इटालियन, ये आप बता सकते हो, राइट। उसके बाद में व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल बता सकते हो। इजीली यू कुड हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप लोग समझिएगा, बहुत ही इजी था, ट्रस्ट मी ऑन दिस। एंड व्हेन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट, जब सेकंड सेट पे हम जाते हैं, उस सेट के अंदर बार ग्राफ गिवन था। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं बार ग्राफ मैं क्यों दे रहा हूं, ग्राफ्स क्यों आ रहे हैं मॉक्स में, बिकॉज एग्जाम में आ सकता है। 3 साल से नहीं आया है, इस साल ग्राफ का क्वेश्चन आ सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार समझते हैं। द फॉलोइंग बार ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ सुपर सीनियर्स, सीनियर्स एंड जूनियर्स स्टडिंग इन वेरियस कॉलेजेस ABCD। तो 4 तो कॉलेज है, ठीक है, ये रहे कॉलेज आपके ABCD, 4 कॉलेजेस है। और ये बात कर रहा है सुपर सीनियर की, 1200 सुपर सीनियर है, देन सीनियर्स कितने हैं 1400, ये जूनियर कितने हैं 800। एक बात समझना, दिस इज कॉल्ड एज स्टैक्ड बार ग्राफ, एक के ऊपर एक रखा हुआ। यहां से यहां तक 1200 है, फिर यहां से यहां तक काउंट किया है इन्होंने, मतलब माइनस करके। ऑल्दो इस वाले फिगर को आप देखोगे तो ये 3500 के आसपास है, पर ये वाला पार्ट सिर्फ 800 है क्योंकि यहां से यहां तक का माइनस कर दिया, ठीक है। दिस इज हाउ दे कैलकुलेटेड, इन्होंने कैलकुलेट करके आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है। आई होप यू गाइज आर गेटिंग दिस।
इन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेशंस करके दी हुई थी, क्योंकि बीच में आपको पता नहीं चलेगा इसलिए दिया हुआ था। अदरवाइज ग्राफ ऐसा भी हो सकता था, समझो मेरी बात, वो ऐसा बोल सकते थे कि भाई ये वाले जो है वो आपके सुपर सीनियर है, ठीक है, दिस इज सुपर सीनियर। इसके ऊपर वाले, अब मैं कलर चेंज कर देता हूं, लेट से दी, इस तरीके से भी दे सकता है कि ये आपको डेटा ना दे। ओके, इधर देखो सब लोग, दिस इज लेट से सीनियर, और इसके ऊपर मैं एक और कलर चेंज कर देता हूं, दिस इज लेट से गिवन एज जूनियर्स, दिस इज लेट से गिवन एज, वेरी गुड बेटा, जूनियर, दिस इज गिवन एज सीनियर एंड दिस इज गिवन एज सुपर सीनियर। अब इनके अंदर नंबर्स नहीं गिवन है, तो आप नंबर्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सब लोग समझो आराम से यहां पर, ठीक है। नंबर्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये 0 से लेकर 2000 तक जा रहा है, तो ये वाला हो गया 2000। अब ऊपर वाला देखो ध्यान से, कहां से कहां तक जा रहा है, 2000 से 3000 तक, सो 3000 माइनस 2000, दिस पार्ट इज गोइंग टू बी 1000 ओनली। ये मत बोलना कि सर ये 3000 तक जा रहा है तो 3000 है, नीचे वाला पार्ट माइनस होगा। सिमिलरली ये कहां से कहां तक है सर, ये 3000 से 5000 तक है ये वाला ग्राफ, तो 5000 माइनस 3000 बिकम 2000 पीपल, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। एग्जैक्टली अनन्या, फिर हमें खुद देखना पड़ेगा। आई गॉट ऑल द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से, लेकिन आपके लिए सेट बहुत इजी था, ऑल द थिंग्स आर ऑलरेडी गिवन टू यू। अब तो बस सीधे आपको क्वेश्चंस के आंसर्स ही करने थे जो आपके सामने हैं यहाँ पर। द डिफरेंस बिटवीन सीनियर्स एंड जूनियर्स स्टडिंग इन कॉलेज सी फॉर्म्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन दैट कॉलेज, राइट। ओके बेटा, परफेक्ट। तो डिफरेंस बिटवीन सीनियर्स एंड जूनियर्स कितने हैं कॉलेज सी में। तो अगर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहूं आपके लिए, तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सो दैट और क्लैरिटी हो जाए। द डिफरेंस बिटवीन सीनियर्स एंड जूनियर्स स्टडिंग इन कॉलेज सी, तो कॉलेज सी के अंदर में सीनियर एंड जूनियर का जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है भाई, 600 माइनस 300 इज 300, फॉर्म्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन दैट कॉलेज। तो टोटल कितने स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उसका कितना परसेंट है, तो इन दोनों का डिफरेंस 300 है, और ये 300 इस टोटल का, टोटल कितना है 1500 प्लस 900 इज 2400, इसका कितना परसेंट है ये आपको क्वेश्चन बताना है। सो 3 8 1/8 कितना होता है 12.5%, दैट बिकम्स योर करेक्ट आंसर। गेटिंग द लॉजिक एवरीवन, इजी क्वेश्चन था। डायरेक्ट आपसे क्या पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 600 माइनस 300, तो जो ये डिफरेंस आ रहा है 300, सीनियर्स और जूनियर्स का जो डिफरेंस आ रहा है 300, ये टोटल बच्चों के कंपैरिजन में कितना परसेंट है। तो इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट ग्राफ में सब कुछ गिवन है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस सेट वाज आल्सो वेरी इजी। ऑल्दो एक दो क्वेश्चंस में थोड़ा एफर्ट्स करने थे, बट सेट बहुत इजी था। ऐसे ही यहां पूछ रहा है नंबर ऑफ जूनियर्स स्टडिंग इन ऑल द 3 कॉलेजेस टुगेदर इज हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ सीनियर्स स्टडिंग इन ऑल द कॉलेजेस। अब तो बस ऐड डिवाइड करके आप इजीली निकाल सकते हो, आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, आप देखो इसके अंदर थोड़ा सा पैराग्राफ बड़ा लग रहा है, बट व्हेन यू सॉल्व दिस आल्सो बिकम्स वेरी इजी। सॉल्यूशन देखना है तो ऑलरेडी अपलोडेड, आप जाकर देख सकते हो। तो एक दो क्वेश्चन ये छोड़ सकते थे जो थोड़े बड़े थे, अदरवाइज द क्वेश्चंस वर वेरी इजी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो फुल मार्क्स, हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, डेफिनेटली। आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू ऑफ लॉ यूजी टेस्ट सीरीज, जिसमें 25 क्लैट मॉक, 15 8 मॉक्स, ऑल द थिंग्स आर देयर। इफ यू वांट टू बाय टू प्रैक्टिस यू कैन बाय एंड कॉल अस ऑन दिस नंबर। अब चलते हैं हम लास्ट सेट के ऊपर में। कितने लोगों को ये सेट डिफिकल्ट लगा, उन्हीं को लगा होगा जिनको की थोड़ा वेन डायग्राम में दिक्कत है, ठीक है। आई होप दिस इज, कितने लोगों को लगा, जल्दी से बताओ भाई, किस किस को ये सेट डिफिकल्ट लगा है। आई डोंट थिंक सो इट वॉज डिफिकल्ट। कुछ लोग कह रहे हैं अभी भी हाँ सर डिफिकल्ट लगा। देखो भाई देख लेते हैं एक बार, अगर डिफिकल्ट लगा है तो नॉट डिफिकल्ट, आई डोंट फाइंड इट डिफिकल्ट एट ऑल। देखो इसमें क्या है, जब भी ऐसा सेट आएगा, हाँ चलो सब लोग आओ देखो, इन आनंदवास लोकेलिटी देयर आर 3 साइंस पार्क्स। कौन कौन से पार्क हैं, S1 पार्क, ओके जी नो प्रॉब्लम, S2 पार्क एंड S3 पार्क। सो S1, S2 and S3, so these 3 parks are there, okay, which were visited by 400 children. So total कितने बच्चे हैं 400, so 350 children had visited S2 park,
350 S2 पार्क देख रहे हैं। अच्छा, एक बच्चा एक से ज्यादा भी पार्क में जा सकता है ना, आपकी मर्जी भाई, मैं S1 पार्क में भी गया, S3 में भी चला गया, S2 में भी खेलने चला गया, मेरे तीनों पार्क में फ्रेंड्स हैं, आई एम गोइंग टू ऑल द 3 पार्क्स, या मेरे सिर्फ S1 में ही फ्रेंड्स है, मैं केवल वहां पे जाऊंगा। तो दिस इज योर चॉइस कि आप कौन से पार्क में जाना चाहते हो। ठीक है, 360 हैड विजिटेड S1 पार्क, 360 लोग S1 पार्क में गए हैं। 375 चिल्ड्रन हैड विजिटेड S3 पार्क्स। ठीक है, कितने बच्चे गए हैं? 375 चिल्ड्रन हैड विजिटेड S3 पार्क्स। ओके जी। 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड विजिटेड ऑल द 3 पार्क्स। तो 80% ऑफ टोटल बच्चे कितने हैं? 400। तो इसका 80% कितना हो जाएगा भाई? 10% इज गोइंग टू बी 40%, 4 8 32। 320 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सारे देखे हैं। ठीक है, आई होप सारे पार्क में गए हैं। 320 80% बच्चे ऐसे हैं जो सारे पार्कों में जा रहे हैं। ये भी सही बच्चे हैं भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ओके, सो 320 आर गोइंग इन ऑल द 3 पार्क्स। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, राइट, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु विजिटेड S3, जितने टोटल बंदों ने S3 विजिट करा है, दैट्स 375, ऑल बट 40 चिल्ड्रन विजिटेड S1। 80 मींस इट इज इंटरसेक्शन, 80 मींस बीच वाला पार्ट, जो तीनों पार्क जा रहे हो। अब ये 320 वाला पार्ट ये हो गया, इसमें देखो S1 का सर्कल भी आ रहा है, S2 का सर्कल भी आ रहा है, S3 का सर्कल भी आ रहा है, सारे सर्कल आ रहे हैं। तो ये 320 बच्चे वो है जो तीनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु विजिटेड S1, जितने भी लोगों ने, अच्छा ऊपर वाला करते हैं पहले, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ, इजी था यार, इजी था, बहुत इजी था, ट्रस्ट मी ऑन दिस सेट वाज आल्सो इजी। डिटेल में मैंने सॉल्व किया हुआ है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। अभी मैं बस एक बार बता रहा हूं, आइडिया दे रहा हूं। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु विजिटेड S3 टोटल 375 बच्चों ने विजिट किया है, ऑल यानी सारे के सारे 375 बट 40, 375 में से 40 को छोड़ करके, 375 में से अगर 40 माइनस कर दोगे तो इन लोगों ने S1 भी विजिट करा है। जिन लोगों ने S3 विजिट करा है वो सारे बच्चों में से केवल 40 हटा दो, तो 375 में से 40 हट गया तो 335 आ गया। ये 335 बच्चे जिन्होंने S1 भी किया है, ऑल्सो S1 भी विजिट करा है। तो S3 के जो ये 375 है, यानी इस पूरे का जो टोटल आएगा, जो S1 और S3 का कंबाइंड पार्ट है, दैट शुड बी कितना? 335। और इस 335 में से ये 320 है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया? 15। Getting the logic everyone? Once again I am explaining, all but 40, यानी ये जितने भी 375 टोटल लोग थे, इसमें से 40 लोगों को हटा दो तो उन्होंने S1 भी विजिट करा है। यानी इस पूरे सर्कल में से S1 वाले पार्ट के अंदर भी जो आ रहे हैं वो कितने हैं? 335, जिसमें से 320 है तो बचा हुआ ये 315 हो गया। ऐसे ही देखो एक और सॉल्व करते हैं, लेट्स डू वन मोर। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु विजिटेड S1, वो बच्चे जिन्होंने S1 विजिट कराए वो 360 बच्चे, इनमें से ऑल बट 30, ये सारे में से 30 माइनस कर दो, 30 को छोड़ करके, 30 बच्चे को छोड़ करके विजिटेड S2 ऑल्सो, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने S2 ऑल्सो विजिट कराए। ठीक है, तो 360 माइनस कितना हो गया? 330। सो 330 ऐसे बच्चे हो गए जिन्होंने S1 के साथ साथ S2 भी कराए, यानी ये पूरा जो इंटरसेक्शन पार्ट हो गया S1 S2 का, ये हो गया आपका 330। अब इस 330 में से ये बीच वाला 320 है, तो ये बचा हुआ 10 हो गया, क्योंकि टोटल का सम 330 होना है, जिसमें से ये 320 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। लास्ट स्टेटमेंट, 85% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड S2 पार्क एंड S3 पार्क। तो 85% ऑफ टोटल चिल्ड्रन, अब भैया टोटल चिल्ड्रन कितने हैं? 400, राइट? तो इसका 85%, तो इसका 85% कितना होगा? 5 4 20, 8 4 32, 340। तो 340 चिल्ड्रन वो हैं जिन्होंने, 340 चिल्ड्रन आर दोज चिल्ड्रन हु हैव विजिटेड S2 एंड S3, यानी ये कंबाइंड पार्ट, यानी दिस कंबाइंड पार्ट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 340। अब इस 340 में से ये अंदर वाला पार्ट 320 है, तो ये बचा हुआ 20 हो गया, 340 माइनस दिस। अब तो आपके सामने सारा ग्राफ बन चुका है, यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। कैसे करेंगे सर? ये पूरा 350 था, जिसमें से 320 ये हो गया, 20 ये हो गया, 340 प्लस 10 350, यानी ये तो 0 बचा। ओनली S2 पार्क जाने वाले कोई बच्चा नहीं है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो खाली S2 पार्क जा रहा है। सिमिलरली अगर आप S1 को देखोगे, टोटल इसका 360 था, जिसमें से ये 320 प्लस 10 330 प्लस 15 345, तो बचा कितना? 15 बच्चे ऐसे हैं जो ओनली S1 पार्क जा रहे हैं।
सिमिलरली अगर आप देखोगे इस पूरे का टोटल S3 का टोटल इज 375, जिसमें से 320 प्लस 20 340 प्लस 15 355 जा रहे हैं कहां पर, इन तीनों जगह। तो 375 में से 355 गया तो 20 जा रहे हैं ओनली S3। डन एंड डस्टेड, इजी एंड इजी टू डू क्वेश्चन। देख रहे हो आप लोगों को पता नहीं क्यों डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि आप लोग अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप कर रहे हो। एक बार इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मेरा नाम डालोगे, बायजूस डालोगे, वेन डायग्राम डालोगे, क्लैट डालोगे, यू विल फाइंड 2-3 वीडियोस। उन वीडियोस को देखो वेन डायग्राम की, सबसे इजी सेट होता है। एक बार ये सारी चीजें आ गई, अब देखो क्वेश्चन डायरेक्ट है सारे। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड विजिटेड ओनली S2 पार्क? ओनली S2 विजिट करने वाले कितने लोग हैं, जल्दी बताओ। ओनली S2 करने वाले 0 लोग हैं, तो 0 आंसर हो जाएगा। जो खाली S2 कर रहे हैं वो कोई भी नहीं है, बी ऑप्शन बिकम द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चंस आर वेरी इजी। फाइंड द सम ऑफ ऑल द चिल्ड्रन हु हैड विजिटेड ओनली 2 पार्क्स। तो ओनली 2 पार्क्स वाले लोगों को ढूंढना है आपको। तो ओनली 2 पार्क्स वाले कौन कौन से लोग हैं, 10 प्लस 20 30 प्लस 15 इज 45। सो 45 बच्चे हैं ऐसे, राइट। सो 45 आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो बस अब तो आपके सामने सारे आंसर्स हैं, यू कैन इजीली सॉल्व इट। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन आपके इजी हो जाएंगे, बट वंस दिस डायग्राम इज मेड। तो यार बहुत जरूरी है कि आप लोग वेन डायग्राम थोड़ा सा कर लें, राइट। वंस अगेन अ रिमाइंडर, क्लैट का क्रैश कोर्स चल रहा है यार, अभी भी 9 PM पे क्लास होगी, आज भी होगी। गो एंड वॉच दैट क्लास ऑल्सो। मैराथन वी आर गोइंग टू कंडक्ट ऑन 1st December at 11 AM. डू ज्वाइन दैट सेशन ऑल्सो। सारे फैकल्टी 1 by 1 आएंगे। आस्क मी एनीथिंग सेशन अभिमन्यु सर विल बी टेकिंग ऑन द ऐप at 26th November at 3 PM, यानी कल 3 बजे अभिमन्यु सर विल टेक दैट। आप जाके जो पूछना है वो पूछ सकते हो उनसे, ठीक है। क्लैट 2020-25 वालों के लिए भी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स वी हैव लॉन्च, वेयर वी आर प्रोवाइडिंग लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ऑल द थिंग्स। स्कॉलरशिप टेस्ट है कल, tomorrow at 11 AM. Go and give that if you want any scholarship in any of our programs. Nivedita ma'am is going to take on 2nd December 6 PM पे 12 months to CLAT की ये वर्कशॉप लेंगे, यू कैन गो। जब हम नेक्स्ट सेशन में जाएंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, इन केस यू सफर एनी काइंड ऑफ बफरिंग, यू कैन रिफ्रेश द सेशन, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। हाँ जी, आई होप ये सब समझ में आया। और अब यार आप लोग समझिएगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग वेन डायग्राम का बेसिक्स कर ले। तो अभी तक भी अगर नहीं किया तो गो एंड डू द बेसिक्स ऑफ वेन डायग्राम। अदरवाइज द सेट वाज वेरी इजी, जैसा कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि यार बस एक बार वेन डायग्राम बन गया, उससे कनेक्टेड 5 क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल द 5 क्वेश्चन विल बी वेरी डायरेक्ट। bar graph set was also easy as we see, because 1 or 2 questions were there जहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, अदरवाइज इट वाज डायरेक्ट। परसेंटेज में तो था ही इजी सेट, इतना सा थ्योरी थी और इजीली वी कुड हैव सॉल्व दैट सेट, तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम किसी को हुई होगी। सो लेट्स गिव इट हैंड इट ओवर टू द नेक्स्ट फैकल्टी, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। Evening to all of you friends, a very good afternoon to all of you. Welcome to BYJU'S exam prep. A very good afternoon to all of you friends, a very good afternoon to all of you. So guys, in this session I'm going to discuss with you this mock 21 legal reasoning. So the kind of questions that came in mock 21 relates to law of contracts, relating to judiciary and sexual harassment, property rights, especially in relation to women, 498A, that is cruelty, as well as compassionate appointment. So today in this particular session, I'm going to discuss with you these particular questions that came in this mock. So guys, let's get going, okay? Now, before I start with the session, it's a very kind reminder that we bring to you a very important crash course with 20 plus power pack live sessions. Those of you who have missed any of these sessions, please go through them. These will help you like leaps and bounds, okay? Now, first and foremost, let's come directly to the attempt section, the attempt strategy. Now, before you start attempting any section, be it legal, be it English, be it anything, you should know your area of strength and your area of weakness. Why? अगर आपको आपका एरिया ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है, तो तभी आपको पता चलेगा, ठीक है, मेरे को क्रिमिनल लॉ ना थोड़ा दिक्कत आता है, सो आई एम नॉट गोइंग टू
I'll attempt them, but at a later stage. My strength is contracts, so I'm going to deal with contracts. So you should know your areas of weakness and your strength. Are you okay with a particular section? If you are not okay, somebody says that, okay, like when you start attempting a particular question paper, अगर आपका strength है maths, start with maths. Somebody's strength is GK, start with GK. So there is no fixed straitjacket formula कि कहां से हम लोग चालू करना चाहते हैं. So you should plan your strategy. There will be lengthy questions, there will be easy passages, right? So lengthy जो है उसको आप तभी के लिए छोड़ सकते हैं. You can attempt it later, so that you have to be very smart while you are preparing for this exam, because all that a law school wants is a smart guy who is trying to solve these questions. Okay, so guys, let's get started. Now the analysis of this thing is, yes, correct question, incorrect question, as well as you can also skip something. Now जो passages easy है उसको तो पहले आपको solve करना ही पड़ेगा. जो passages आपको थोड़ा सा tricky लग रहा है, I am not asking you to skip them for the time being and attempt them later, so that you have a lot of time. आप पहले अगर GK कर रहे हैं, so in 15 minutes time you are going to solve around 30-35 questions. If you start with legal, you know that okay, legal मैं around 35-40 minutes के अंदर मैं another 30 questions I am going to solve. So you keep some of your questions which you think is little difficult and little tricky for the end. So that's the thing. You also have to find easy questions. That's very, very important. जो questions easy है, क्योंकि tough question solve करके और easy question solve करके marks का कोई difference नहीं है. Every question has 1 mark. So if you solve a tough question, you cannot claim 2 marks. Sir, I solved the tough questions. No, marks is all equal. So you have to identify, find the easier ones, and then accordingly you need to solve. So guys, another very important thing is that we are bringing to you a 6-hour non-stop marathon on 1st of December at 11 a.m. So do not forget to join us on the 1st of December at 11 a.m. for a 6-hour non-stop marathon. The first passage, let's go. Let's start with the first passage. Now, here is a particular passage that deals with frustration of contract. Okay, let's read the passage. Now, first, insofar as the global situation, global events in the last few years have made it increasingly difficult for companies to fulfill their contractual obligations. So, it is becoming difficult for companies internationally to fulfill their contractual obligation. As a result, many businesses have to consider whether they can delay their obligation under the contract without initiating breach of contract. So if you do not perform what you have promised, it amounts to breach of contract. Now, to escape the breach of contract, companies are thinking whether they can delay their obligation. In specific circumstances, the doctrine of frustration may come to a business aid. So it comes to the help of a business entity who is trying to delay the process. In the ordinary course of events, if one party fails to perform their key obligation under the contract, they will be liable to pay damages, that is compensation, as a result of the default. However, the doctrine of frustration establishes an exception to the general rule. Now let's see what is this exception. Doctrine of frustration is triggered when an unforeseen event makes performance of the contract impossible. So there is an unforeseeable event that makes the performance of the contract impossible. Or the contract itself has become something radically different from what was contemplated by the parties at the time it was entered into. A contract is effectively brought to an end if the ground of frustration is successful relied upon. Unlike some other doctrines, there is no specific or narrow test for establishing frustration. The court takes a broader approach when considering frustration
and will consider all the facts and circumstances of the case. That being said, there are some general key factors which will be common to all frustration matters. So let's see what are those common things that happens in frustration. The frustrating event occurred after the contract was formed. So the unforeseen event has taken place after the contract was signed between the parties. The frustrating event is not due to the fault of either of the parties to a contract. The frustrating event results in the performance of the contract being completely beyond which either party had in mind when the contract was formed, and the impact of the event strikes at the root of the contract. So here is an event that strikes at the very initiation of a contract. Okay, after the contract is made, some frustrating event has taken place, some unforeseeable event has taken place, and which impacts the root of the contract. The frustrating event means that further performance of the contract is impossible, in some cases illegal, and makes it drastically different from the contemplation of the parties by the parties. In Crook versus V-point system, the Ontario Supreme Court of Justice decided that an employer's refusal to comply with mandatory COVID-19 vaccination. So here was a person who did not take COVID-19 vaccination. But the company said, it is definitely required. If you do not have a COVID-19 vaccination, you cannot be a part of my company. That was a requirement, resulted in the frustration of the parties' employment relationship. The employer, therefore, was entitled to terminate the employee's employment without providing notice of termination or damages in lieu of the common law reasonable notice. Now, when you want to throw a person out of job, you have to give a reasonable notice. Now, it was not done on the pretext that this man did not take COVID-19 vaccination. And the Ontario Supreme Court held that it is frustration of a contract. So, let's go to the questions. Okay, so I hope that it's all clear what is frustration of a contract. What does the doctrine of frustration mean? So the law will not compel a man to do what he cannot possibly do. Good. A law must be based on the principles of future impossibility of events. Not a great answer. Okay. No impossibility is bigger than the contract. Absolutely not. Nothing is impossible for a person who is willing to perform his part of the contract. No. Between A and B. Now, if you have to choose between A and B, tell me. Now, option A is much, much better off. The law cannot compel a person to do something which he cannot possibly do. That is what we understand by frustration. Right? Very good. Very good. Brilliant. Moving on to the next question. A citizen of country X entered into a contract with B. So A belonged to country X, B belongs to country Y for the export of 2,000 cosmetic products. After the delivery of 1,000 products, a war was declared between the countries, Ukraine and Russia. I give you these examples in the live class. Therefore, thereby suspending all transaction between the countries by the government. Hence, A could not deliver the remaining 1,000 products. B filed a suit against A for breach. Now, is he liable for breach? The answer is no. I'm not going to read option A and option B because it starts with yes. No, since the contract has become void due to impossibility of his performance. Yes. No, since A can still deliver products secretly to B. Of course not. Option C is the right answer. So, are you guys understanding how we are trying to solve these questions? Is that clear? So, please try to understand how we are solving this question. Now, this question is very, very simple because if you understand if you have read the passage carefully, I tell it every time, hundreds of times I have told you guys, if you are understanding the passage, it is not difficult at all to solve the questions. Okay, so option C is the correct answer. Moving on to question number 3.
A contracted B to sell 20 kilos of rare quality rice for rupees 20,000. Before the delivery of rice, the government increased the price by 40%, due to which A did not supply rice. B sues A for breach of contract. Decide whether A is liable. Now, just because the price of certain goods have increased, this is not frustration of a contract. Please keep this in your mind. Agar price of commodities have increased, is it frustration of a contract? The answer is no. It is not a frustration of contract. Frustration of contract is something else. The passage clearly says so. Right? So question number 3, yes, since the contract is valid and not frustrated, yes. Yes, since the contract is voidable at the option of B, no. No, I am not going to read at all. So option A is the right answer. So please, 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 पूरा पैसेज पढ़ो, एक बार समझ लो, आंसर करना डिफिकल्ट नहीं होगा. Okay. Question number 4. A theater artist contracts B, the manager of a theater, to perform at the theater for 8 months in consideration of 20,000 rupees or dollars for a performance. After the 4th performance, she met with an accident, lost both her legs. Now, here is a person who wants to perform in a theater. Now, can you perform in a theater without legs? Can you perform in a theater? Dance, you have to walk. In a theater, that happens. Somebody has to walk. You have to perform. How will you perform without your legs? So the contract has frustrated. Decide whether A is liable for breach of contract. The answer is no. No, since the contract is void from the beginning. Of course not. Since the contract is frustrated. Option D. A, B, I am not going to read because it starts with yes. I am not going to read. I have to save my time. Am I clear? Are you guys following how are questions to be answered? Okay. Option D. Moving on to the next question, question number 5, which of the following passage cannot be concluded from the passage. Okay. Global events in the last few years have made it increasingly difficult for companies to deny their contractual obligation. True. Cannot be concluded. Okay. In the ordinary course of event, if one party fails to perform their key obligation under the contract, they will be liable to pay damage. True. An employee's refusal to comply with mandatory COVID-19 vaccination requires a result of the frustration of a parties employed in a relationship. True. A contract is effectively brought to an end if the ground of frustration is successfully relied upon. Sorry. Okay. Now, option A, I'm so sorry. This is, I'll tell you why is it false. Global events in the last few years have made it increasingly difficult for companies to not deny their contractual obligation. Is that clear? It cannot be concluded. Okay. Is that clear, everyone? Is that clear? Because, is that clear? So option A here says that global events in the last few years have made it difficult for companies to deny their contractual obligation. They cannot deny. Because unless and until you come under that frustration provision, you cannot deny your contract. Is that clear? All of you? Okay. Moving on to the next question. Next passage, rather. Now, here is this particular passage that deals with a particular case of Madhya Pradesh, wherein a judge was accused of sexual harassment. Okay, here was certain allegation against a sitting judge of the Madhya Pradesh court. So let's read the passage. As a counsel
for the petitioner, that means as an advocate for the petitioner in X versus Registrar General, High Court of Madhya Pradesh and others, which resulted in the reinstatement of the former additional district judge who resigned following her transfer and allegations of sexual harassment against a sitting judge. So here was a woman judge, a lady judge, who made certain sexual harassment against a judge or another colleague of hers, and following which she was transferred and later on she resigned. Indra Jaising reflects on her experience in arguing this case and the power dynamics which characterizes the gender imbalance in the profession. Sexual harassment is a fact of life within the legal system, be it by judges, serving or retired. It is a fact of life for women, be then intern, practicing lawyers or judges. So it's a fact of life. That is what Shri Indra Jaising says. I have personally handled the cases of no less than 3 women judges who have taken male judges to the court for sexual harassment at workplace. However, they were all unsuccessful attempts. The first success has come with Miss X versus Registrar General, High Court of Madhya Pradesh. So this is the 3rd case she was doing, and this is the first case out of the 3 where she was successful. That is what the lawyer says in this particular passage. A bench comprising of Justice Nageshwar Rao and Justice B.R. Gawai heard the detailed argument made by Senior Advocate Indra Jaising, appearing for the petitioner, and the Solicitor General Tushar Mehta, appearing for the Madhya Pradesh High Court. While expressing concern regarding the absence of the mechanism within the judiciary to address the injustice caused due to sexual harassment, Senior Advocate Indra Jaising argued the court to put in place such mechanism. Now, here is a situation where there is no mechanism to address sexual harassment in courts. So Indra Jaising, the learned senior advocate, is telling the court to put in place a particular mechanism to deal with sexual harassment within the judiciary. It is painful to see sexual harassment in the judiciary, and that too without a mechanism to address the injustice caused. I would argue, Your Lordship, though through your judicial marvel, to put in place the mechanism. This is not the first case of woman judicial officer facing sexual harassment. So she pleads the court that Your Lordship may put in place a mechanism to deal with sexual harassment, because this is not for the first time a woman has come to this court who has faced sexual harassment. He stated that there exist policies in place which enables employees to make complaint of sexual harassment. As irony would have it, the petitioner was heading that committee appointed by the High Court to entertain complaints by employees. So the woman who is making the allegation was herself heading a committee to deal with sexual harassment complaints in High Court against co-employees relating to sexual harassment. There was no policy in place which enabled the judicial officer to make a complaint of sexual harassment against another judicial officer. This was the primary reason for her resignation. When one asked the question as to why she did not complain, one has to understand that there was no complaint mechanism in place. She submitted that while she is concerned about the judiciary as an institution, she is equally concerned about the position of women in judiciary. Senior Advocate Jaising stated that it is true that the petitioner raised the allegation against the High Court judge after the termination of her services. But before that, she had been speaking to people about it and seeking meeting with the Chief Justice of the High Court. She pointed out that there exists no written policy in place that a judge can access to make a complaint of sexual harassment at the workplace. So there is a vacuum. There is no such mechanism, and hence the advocate is praying to the court that let Your Lordship put a particular mechanism to deal with sexual harassment. So guys, let's move to the questions. Which of the following can be concluded from the passage? Can be concluded
from the passage. Okay, there is no complaint mechanism to address the complaint of sexual harassment by judicial officer against another judicial officer. Yes, this is true. There is an effective complaint mechanism to address complaint of sexual harassment by judicial officer against another judicial officer. False. Right? There is a complaint mechanism to entertain complaints by employees of High Court against co-employees regarding sexual harassment. This is again true, because the woman who was making the allegation, she was herself heading that complaints committee. There is no complaints mechanism to entertain complaints by employees of High Court against co-employees relating to sexual harassment. False. So 1 and 3 is true. Okay, and 2 and 4 is false. Statement 1 is correct. Statement 2, 3, 4 are false. No. 1 is incorrect. No. 1 and 3 are correct. Statement 2 and 4 are incorrect. Option C. Option C is the right answer. Is that clear? So it is not difficult. You have to just understand the questions. You just need to understand the questions, guys. Okay. Option C. Moving on to the next question. According to the passage, what is the reason behind the resignation of the petitioner? Absence of mechanism complaint. Absolutely easy. Okay. 8. Which of the following can be concluded from the passage? Miss X versus Registrar General of Madhya Pradesh and others was the first case? No. X versus was the fourth case? You cannot decide because she was doing her third case. Maybe, may not be. Because Indra Jaising says this is her third case. And there can be 4, 5, 6, 7, God knows. It's not provided in the passage. There has been many cases against where women judges have made male judges to the court, has taken male judges to the court for sexual harassment at workplace. But X versus Registrar General was the first successful attempt. True. This is true. All the cases where women judges have taken male judges to the court at workplace were handled by Indra Jaising. No, it was her third case. There can be more cases also. So option C is the right answer. So आपको थोड़ा सा carefully देखना पड़ेगा. Questions तो उतना difficult नहीं होगा. A, additional district judge in X High Court. B, a senior judge in Y High Court was the head of a committee on environmental disaster, of which A was also a member. So A and B both are senior are judges. They were all members. One day, when everyone started leaving after completing their work, the senior judge asked A and other members of the committee to stay for 2 more hours to complete an urgent work, which everyone agreed. This irritated A and she filed a case of sexual harassment against B. No, this is not a case of sexual harassment. If a male judge asks a woman judge, please stay back, we have some more work. No, that cannot be a case of sexual harassment. The correct answer is option C. No, since B did not sexually harass A. Option C. Okay, moving on to the next question. A, an additional district judge of X High Court. She wanted to head the tribal commission for which she mailed her application and was waiting for her selection. She shared this news with another judge of X High Court who also applied and got selected. This made A furious and she decided to revenge B by filing a false sexual harassment case against him. She even called B and asked to refuse to head the tribal commission. B in return made sexual colored remark on A and harassed her sexually. So here is the turning point. B in turn made sexual colored remarks on A and harassed her sexually. So whether B is liable? Yes, B is liable because he made sexual colored remarks against A, which has in turn be called as sexual harassment. So option A is the right answer. Okay, option A becomes the right answer. Is that clear, every one of you? Okay, so yes, any questions that you guys have? Any questions that you guys have?
Okay, so let's move on to the next passage. Now, here is a passage that deals with dissolution of marriage on the grounds of cruelty. Okay, dissolution of marriage. Let's read it. While upholding dissolution of a couple's marriage on the ground of cruelty, the Delhi High Court has observed that repeated use of derogatory and humiliating words by the wife against the husband and his family amounts to cruelty. Court said that every person is entitled to live with dignity and honor, and no one can be expected to live with constraints, abuse being hurled upon him. So a woman, if he is abusing the husband and the family members repeatedly, it also amounts to cruelty, for which the husband can get divorce. The division bench upheld the finding of the family court, which observed that the husband was treated with cruelty by the wife and that she used to abuse him and his parents in filthy language. The bench dismissed the wife's appeal, challenging the order passed by the family court, and passed a decree of divorce allowing the husband's petition under 13(1)(a) of the Hindu Marriage Act, seeking dissolution of marriage. So the court granted the husband relief by granting divorce because the court felt that hurling abuse against the husband, against the family members of the husband repeatedly amounts to cruelty. In the present case, the conduct of the appellant wife, which has been proved on record, is of such quality, magnitude and impact as would have caused mental agony, pain, anger and suffering to the husband on a regular and continuous basis, and thus clearly amounting to cruelty. Very, very important. Now, what are the grounds for divorce? You have adultery, then you have cruelty, and I'm sure that what is cruelty, you are aware of mental and physical injury, which relates to life, limb and health. Desertion means if the husband or the wife has left the partner for at least 2 years period, one of the spouse can go to the court and get a decree of divorce on desertion. Then conversion, if either of the spouse converts from one religion to the other. Okay. Then you have mental disorder. If any of the spouse is suffering from mental disorder or leprosy, but leprosy as of now is not a ground for divorce. It was a ground for divorce, but as on today, it is no more a ground for divorce. So, certain amendments have taken place. Then venereal disease. Now, these are certain communicable disease like AIDS, HIV positive and all those kind of things. If one of the spouses have that, the other spouse can go to the court and get a decree of divorce. Then renunciation. Renunciation means if you become a brahmachari, if you leave this worldly affair and embrace a religious order, okay, the other spouse can file a divorce. So these are the various grounds. And the last ground is not heard life. So if a person has not been heard to be living for at least for a continuous period of 7 years, then the other person, the other partner can go to the court on the presumption that he or she is dead. So if a person is not heard alive by those who are expected to naturally heard of that person for a period of 7 years, then he is presumed to be dead. And since that man is presumed to be dead under the Indian Evidence Act, the other spouse can go to the court and claim a decree of divorce. Here was the first question. A and B are married for 8 years. On the 8th anniversary, A confessed to B that he had indulged in an adulterous relationship with their neighbor, Mr. D's wife C. But he ended the relationship soon after. So here is a case of adultery. He even confessed that he realized his mistake and his love for B, which was the reason he ended up the relationship. B filed for divorce, but A pleaded that a single act of adultery cannot be a ground for divorce. Who said that? A single ground of adultery can be a cause for divorce. A single act of adultery can be a ground for divorce. Option A. Option A. Very easy. It is absolutely easy. The passage categorically says adultery, and here is a case of adultery. The man, the husband himself agreed to that.
imagine in the previous situation, what will be the consequence if A and B's neighbor, Mr. D, comes to you to seek legal advice to file divorce against his wife C for the offense of adultery. Suggest Mr. D whether he will succeed. Yes, Mr. D will succeed. Mr. D will succeed because the wife C indulged in adultery with somebody's husband. Is that clear? Since D's wife C indulged in an adulterous relationship with A, absolutely, absolutely. Okay, so option A is the right answer. Moving on to question number 13. X and Y are married for 2 years. X left the country for his MBA and did not return for 7 years. During that time, Y asked X's friend, relative and others, please other person who could have known about X's whereabouts. But nobody knew anything. Nobody knew anything. Nobody knew anything for 7 years. She even filed a missing complaint, but the police were unable to find anything about him. So she finally decided to get married to Z. She filed for divorce after 7 years and she was granted a decree. After 2 years of her marriage with Z, X returned and claimed that Y's marriage with Z is invalid. No, there is a 7 years. You were not heard. There is a presumption that you are dead. And the wife made police complaint, asked his friends, relatives, and other person who would know about X's whereabouts. Nothing was heard. So this is a case of presumption of dead. X is presumed to be dead because nobody heard anything about him for 7 years. Okay. Moving on to the next question. A and B are Hindu couple married for 4 years. A is a writer and he immensely influenced by Christian religion. His love for Christian religion is evident in his writing. On many occasions, he made it clear that he wanted to convert to Christianity, but he could not do so because of his parents. Once he requested his wife B to attend a theme party in a Christian wedding costume. This made his wife B very angry and she approached the court asking for a divorce. Now, he did not convert. Did he convert? Did A convert? No, A did not convert. I might love Buddhism. I might love Islam. But have I converted? The question is over here. Has this man converted to another religion? The answer is no. So, he has not converted to another religion. So, this is not a ground for divorce. Okay. Okay, let's move on. Next question is relating to inheritance of property for women. Another very important passage for every one of you because, yes, every one of you because this is a very important passage. Okay, let's read the passage. The sole surviving daughter of a Hindu male is rightly entitled to the inheritance of his father who died without executing a will. So if a father dies without executing a will, the Hindu daughter has right over the father's property. The apex court had ruled that the daughter is competent for the inheritance of property that can be both self-acquired or share received in the partition of a co-partnership property. So father's self-acquired property as well as father's inherited property, the partition of a co-partnership property. The daughter has equal right. The only daughter is the heir of a Hindu male who has died intestate, that means without a will, or died in absence of a will, and not others such as his brother. Good. Right of a widow or daughter to inherit the self-acquired property or share received in partition of a co-partnership property of a Hindu male dying intestate is well recognized both under the old customary Hindu law, okay, as well as other judicial orders, judicial pronouncements. If a property of a Hindu male Hindu dying intestate without a will is a self-acquired property or obtained in a partition of a co-partnership property or a family property, the same would dissolve by inheritance and not by survivorship, okay, without a will.
and a daughter of such Hindu male would be entitled to inherit the property in preference of their collaterals. So, चाचा के बच्चे से वो मतलब, see, there is first class legal heir, second class legal heir. So there are in Hindu law, those are little technical things. But a woman in this passage, according to the passage, a woman is entitled to his father's property, both inherited as well as self-acquired, right? If a female Hindu dies intestate, childless, the property she inherits from her father and mother would go to the father's heir. And the property she received from her husband or father-in-law would go to the husband's heir. And in case a female Hindu dies, leaving a husband and a child behind, then the property passed on to the husband and her children would include the inheritance from her parents. So, if a woman dies, having the husband and a children, then whatever property she has received from her father would also be devolved between the husband and the children. Very important, read it. The 𝗟𝗏𝗴𝗃 school of law, the 𝗟𝗏𝗃 law, recognized inheritance by succession of a property owned by individual, male or female. And over the years, various sub-schools of the law added multiple female relation to define her heir to the inheritance. It is abundantly clear that a daughter was in fact capable of inheriting the father's separate estate. So here is a situation where a daughter is capable of inheriting the father's own property, separate estate, okay, self-acquired property. From the above discussion, it is clear that the ancient texts, as also the smritis and the commentaries written by various renowned learned person and even judicial pronouncement, have recognized the rights of several female heirs, the wives and daughters being the foremost of them. The right of women in a family to maintenance. Now it deals with maintenance, where in every case very substantial right, and on whole it would seem that some of the commentators erred in drawing adverse inference from the vague reference to women's succession in the earlier smritis. The views of the 𝗟𝗏𝗃 on the matters are unmistakable. BYJU'S also nowhere endorses the view that women are incompetent to inherit. So reading this passage, मेरे को जो लग रहा है कि this is morely about the fact that woman has every right. A woman has every right to inherit the property of the father, self-acquired as well as family property. Okay, so let's see. According to the passage, who will inherit? Who is entitled to the property of a Hindu male who dies interstate without a will, leaving 2 daughters and 5 sons? Okay, the father, D1, D2, and son 1, son 2, son 3, son 4, son 5. There are 7 children. Only daughters will get the share. Only the son will get the share. All of them will get equal share. Yes, everyone will get 1/7, 1/7, 1/7, and so on. Everyone equal share. Everyone. 16. A Hindu male dies intestate on 9th of September 2022. He has 2 daughters and 2 sons. Okay, the father, D1, D2, S1, S2. Who has a right over the property if it is ancestral one? All of them. All of them. All of them will get equal share. Everyone. Very simple question, just to confuse you guys. It's just there to confuse you. 17. X, a female Hindu, inherited various lands and villas from her father Y. So X is a woman, inherited a lot of land from her father. Okay, her father. Okay, she dies in 2022, dead. Okay, X is dead. She inherited a lot of property from her father. Decide who will inherit the property
if her husband A is husband, her father-in-law B is father-in-law, okay, paternal uncle C is paternal uncle, her maternal uncle D, maternal uncle D, her maid, so I don't have to consider E because maid nowhere, okay, took care in her illness. F, her paternal aunt, P-A-T aunt, and G, her son. So G, her son, and the husband will inherit the property, because if you are dying without leaving a will, then the wife's property will be divided between the husband and the son. A and G. I have to look for A and G. A will get the share. A will get all the share. No. A and G will get the property. Yes, A and G will get all the property. It will be half. 1 by 2. Husband and son. A between A and G. Is that clear? Based on the passage. Moving on to 18. Imagine in the previous question, X dies leaving her husband, son and daughter. X dies leaving her husband, son and daughter. Will your answer change? Yes, the answer will change. 1 by 3. Yes, because now the property will go to her husband, son and daughter. Brilliant. Because option C says now it will be divided between son and daughter only. No, what about the husband? Husband also has a right under the passage, right? So this was again a pretty easy question, right? Pretty easy question for all of you. Before I move on to the next set of questions, BYJU'S Exam Prep brings to you the 6-hour non-stop marathon on 1st of December. Do not forget. Okay. So here is a particular judgment passage that deals with 498A, cruelty. Now, this article criticizes this concept. Now, in a judgment last year, the Supreme Court expresses concern relating to 498A being used as an instrument by women to settle personal scores. So, against the husband and the relatives. So, women are using 498A as an instrument or as a sword against the husband and the relatives to settle personal scores. It becomes pertinent to mention that the incorporation of section 498A was aimed at preventing cruelty committed upon a woman by her husband and her in-laws by facilitating rapid state interference. The judgment said, however, it is equally true that in recent times matrimonial litigation in the country has also increased sufficiently and there is a greater dissatisfaction, okay, in this increasing significantly, and there is a greater disaffection and friction surrounding the instrument of marriage. This has resulted in an increased tendency to employ provisions of 498A to settle personal scores against husband and relative. So this is the particular passage. The bench said that decisions clearly demonstrate that the court had at numerous instances expressed concerns over the misuse of 498A and increased tendency of implicating relatives of the husband in matrimonial dispute without analyzing the long-term ramification of a trial on the complaint. It is further manifested that the said judgment that false implication by way of general omnibus allegation made in a course of matrimonial dispute, if left unchecked, would result in misuse of the process of law. Therefore, this court, by way of its judgment, has warned the courts from proceeding against relatives and in-laws of husband when no prima facie case is made out against them. So the court says that, there has been a lot of misuse of this particular law, 498A, by the wives against the husband.
So in case there are certain allegations, the court has to look into the veracity of these allegations before arresting the husband, husband's relatives, and the in-laws. Section 498A of IPC is aimed at preventing cruelty committed upon a woman by her husband and in-laws, right? For this purpose of the section, cruelty is any willful conduct is of such nature as it is likely to drive the woman to commit suicide or cause grave mental and physical injury to her. It can also be an act of harassment with regards to demand for any property and valuable security. So here is a particular passage that criticizes the manner. Of course, 498A was created for a particular purpose, but it has been misused. So here is a passage that deals with misuse of cruelty laws by women. 19. Which of the following states the central legal idea of the passage? 498A is been misused for implicating husband and their relatives. Absolutely A. 498A is being misused. Misuse of 498A is the passage. That is what it is. Next question. According to the passage, which of the following can most appropriately prevent the misuse of the process of law? Court should abstain from proceeding against husband and in-laws when no prima facie case is made out against them. Good. Court should refuse to entertain complaints under 498A. No. Court should ask wife to approach National Commission for Women. No. Court should ask wife to seek divorce. No. Option A is the right answer. Very simple again. Okay. Next question. Which of the following statement can be concluded? Rise in marriage has led to the increased misuse of 498A. Okay. 498A plays a vital and effective role in preventing cruelty committed upon a woman by her husband and in-laws. Cannot be confirmed that much. Women these days are becoming non-cooperative with their in-laws. Cannot be confirmed. Husbands are not willing to leave their parents for their wives. Cannot be confirmed. Amongst the four, by the process of elimination, we come to the correct answer. That is option. Sorry. There is a sorry. A rise in marriage has led to increased misuse of section 498A. This is also not true, because rise in marriage is not true. Section 498A plays a very important role in preventing cruelty upon women by the husband and in-laws. It is true. It is true. This is true. This is true. Option B is the correct answer. Option B, not option A, option B, because 498A has been a very good instrument to curb this maniac of cruelty, but there has been misuse. But option A says rise in marriage has led to increased misuse of 498A. This cannot be concluded. Not when marriages were less also, there could be more 498 cases. That cannot be concluded, but option B can be concluded. Option B. Moving on to question number 22. Which of the following instances will not be covered under 498A? Okay. Husband refuses to give food to wife for not bringing enough dowry. Okay. Father-in-law suggests daughter-in-law to pursue higher studies. How will it be cruelty? ससुर बोल रहे हैं अपने बेटे के वाइफ को कि आप फर्दर स्टडीज के लिए जाओ. Is it cruelty? Option B. Option B. Is that clear? Option B is the right answer. So this is how you can solve the questions. Okay. Before moving on to the next passage, BYJU'S exam prep brings to you CLAT 25, 12 months to CLAT 2025, 2nd December, 6 p.m. by Nivedita Raji. Okay, so definitely do not miss it. It's a workshop. From 23 to 26. The Supreme Court recently summarized the principle citing 𝗟𝗏 of judgment relating to compassionate appointment. What is the principle of compassionate appointment? Now, say if there is a sole bread earner of a family, and suppose a man goes to some job, earns money for the living of the entire family, and if that man dies, there is a lot of financial problem that happens in the family. To prevent that, there is a provision of compassionate appointment. There is a provision of compassionate appointment.
Provision for compassionate appointment makes a departure from the general provision providing for appointment to a post in a particular procedure for recruitment. Appointment on compassionate grounds is not a source of recruitment. The reason for making such a benevolent scheme by the state or the public sector undertaking is to see that the dependents of the deceased are not deprived of the means of livelihood. Compassionate appointment are not as vested right that can be exercised at any time in future. Compassionate employments cannot be claimed or offered after a lapse of time after the crisis arose. Now, the provision deals with the fact that जब कभी किसी के घर में कोई किसी का देहांत हो जाता है, was the sole bread earner of the family, then to help that family coming out of that financial crisis, किसी उस घर में किसी को एक employment देते हैं. That is called compassionate appointment. Now, you cannot claim it after the crisis is over. Then the purpose of compassionate appointment is defeated. The financial condition of the family of the deceased at the time of the death of the deceased is the primary consideration that ought to guide the authorities' decision in this matter. The High Court of Tripura last year held that the married daughters are eligible to appointment on compassionate grounds. The court noted that marriage does not break the bond between the daughter and her parents and does not between the son and his parents. A crisis in a family of the parents equally worries the married daughter. As such, there is no rationale behind exclusion of a married daughter from the scheme. So, married daughter can also claim compassionate appointment. Very, very important. Married daughter can also claim compassionate appointment. Therefore, a die in harness policy as much as it operates as a disqualification in a case of married woman as against a married man would be held to be discriminatory under the touchstone of 14 to 16. So this is the passage. Let's start with the questions. A made a representation to XYZ government organization that she should be given appointment on compassionate grounds as her father B died during his employment in the company in 2000. Her application is rejected solely on the ground that the state government die in harness scheme exclude married daughters from compassionate appointment. She is married daughter. Decide A is entitled to compassionate appointment or not. Yes, she is, because it violates the die in harness policy. Violates. That is what the Tripura High Court says. That is precisely what the Tripura High Court says. It is violative of 14 and 16. She is eligible for compassionate appointment. She is eligible for compassionate appointment. Moving on. Statement 1 and statement 2. State is under an obligation to provide compassionate appointment only to married daughters. No, unmarried daughters also. So this is false. State cannot discriminate against married daughter in compassionate appointment. Yes, this is true. So number 1 is false. Number 2 is true. Statement 1 is correct. No. Statement 1 is incorrect. Statement 2 is correct. Yes, option B. देखिए, आपको पैसेज पढ़ने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा सॉल्व करने में. A is a hard-working student who fails to get a job even after getting the highest mark in the college. His classmate, on the other hand, gets a job on compassionate appointment after the demise of his father. He challenges compassionate appointment on the ground that such appointment exists with the sole purpose of depriving hard-working candidates from securing a job. Now, this is not decide the purpose of compassionate appointment. Compassionate appointment exists to deprive hardworking candidates from securing a job. Compassionate appointments exist to favor children of employees. Compassionate appointment exists to favor bloodlines of loyal employees. Compassionate appointment exists to save dependents of the deceased from being deprived of their livelihood. Yes, from their livelihood, because their sole bread earner died. Is that clear? Yes, moving on to question number 26, right? Yeah. X died in harness in 2010. X's family suffered from a sudden financial crisis, but the same was resolved when the wife started earning.
why their son applied for compassionate appointment in 2020. Death in 2010, applying in 2020. The Salbad crisis is when the crisis is absolutely over. Whether why is entitled to get compassionate appointment? Absolutely no. 10 years have lapsed. 10 years have lapsed. 10 years lapse हो गया है, अभी आप नहीं कर सकते हो. Am I clear? Is that clear? All of you? Is that clear? Everyone? Okay? Is that clear? Okay. Okay. Just a sec. I think there is some, yeah, got it. Chalo, aajo. Okay, that is option C. Yeah. Before I move to the last passage, BYJU'S Exam Prep brings to you a scholarship test. Get up to 90% scholarship on our preparation program. 26th of November, 11 a.m. Hurry up, register now for the scholarship test. The next passage. This passage deals with obscenity. That is the Huygens test and all. Obscene is derived from the Latin word obscensus, which means foul, repulsive. The term obscenity is used to describe acts that are usually associated with sexual immorality and things that offend the majority of the people. The term has a significant legal context. Indian laws, as well as the Supreme Court, has been unable to precisely define obscenity. However, the Indian legal system has various provisions to deal with obscenity and punishes obscenity. 294 of the IPC is one such provision that punishes performance of obscene acts, songs, ballet, or words. The right to free expression enshrined under Article 19 is not absolute, which means it is subjected to reasonable restriction, including sovereignty, integrity of the state, security of the state, friendly relation with foreign countries, public order, decency, morality, contempt of court, defamation, and incitement to an offense. So, Article 19 is not absolute. Your freedoms are not absolute. There are certain restrictions to it. Whether the work depicts or describes sexual conduct as defined by the applicable state laws in a patently offensive manner. So you have to understand whether there is a patently offensive manner or not. Taken as a whole, the work falls short of literary, artistic, political, or scientific value. So these are the conditions under which you have to see whether a particular thing is obscene or not. What are the tests? This is the first one, is the Miller's test. Now, what is the Miller's test? Miller's test is frequently applied in the US, named after the Supreme Court's decision in Miller versus California. It is divided into three parts. What does an average person enforcing modern community standard finds? What will a average Indian, will they consider this as obscene or not obscene? That, number one. The Huygens test for obscenity is based on Regina versus Huygens. This is the second test. It's a very important test. The entire case was predicted on the interpretation of the word obscene. It was given a very liberal test. By applying this, in the case of 𝗟𝗪𝗀𝗀𝗀 versus State of Maharashtra, the court held that the novel Lady Chatterley's Lover is obscene, and the appellant was convicted under 292 for selling this book. So there was a particular book which was held to be obscene. Although a very liberal test was given under the Huygens test, this was followed by the court in 𝗟𝗪𝗀𝗀𝗀𝗀 versus State of Maharashtra. Now let's come to the most important thing. What is the Supreme Court currently thinking about this obscenity? Community standard test. This test replaces the Huygens test. In the case of Avik Sarkar, State of West Bengal, according to the community standard test, art, gesture, or content are only considered obscene if the dominant theme as the whole is in violation of the current standard prevailing in the community. Now there can be, 200 years back, a woman wearing a mini skirt, somebody could say that it is obscene.
But today, in this 21st century, a woman might wear a mini skirt and it will not be considered as obscene, because what does the community as a whole? Now, autobiographies, there can be a dark side of a particular author or a particular actor. Now, just by showing that dark side, it does not mean that you are doing some obscene things. Is that clear? So you have to understand the dominant theme of the entire thing and then decide whether a particular thing is obscene or not. In which of the following case the lady 𝗟𝗲𝗴𝗹 was held to be obscene? 𝗟nci𝗵𝗴𝗃 state of Maharashtra. Very easy question. Okay, which test was applied in 𝗟nci𝗵𝗴𝗃 state of Maharashtra? The Hykin's test. The Hykin's test was applied directly from the passage. Absolutely easy. In which judgment replaced, which of the following judgments replaced the Hykin's test with the community standard test? That is Avik Sarkar, I think Justice Nariman's judgment. Avik Sarkar versus State of West Bengal replaced the Hykin's test that was there in 𝗟nci𝗵𝗴𝗃's judgment. State of Maharashtra's judgment was replaced by Avik Sarkar, State of West Bengal. Next question. A very famous writer. She often writes many novels on sensitive and controversial subjects. After a gap of 12 years, she comes up with a new novel titled Ficca's Happy Life. The novel discusses various phases in the life of Mrs. Ficca, along with her abusive married life. The novel discusses various incidents which are considered obscene by certain people. Decide which of the following test is likely to save her work. Now, she is talking about a particular life of a particular individual. Now, every individual will have good phases, bad phases, brightness as well as dark side of life. Now, you cannot decide. Now, Miller test and Hykin's test, little, of course, Hykin test was liberal, but Miller was very conservative test. The best thing is the community standard test. The community standard. What does the community as a whole? She is talking about a life of an individual. There can be ups and downs. There can be darkness and brightness. So you have to consider the community standard test, which will help her to save her work from being called an obscene thing. Is that clear? Is that clear? So I hope all of you understood. Okay. So, before I end, BYJU'S exam prep brings to you Ask Me Anything. This will be a particular session conducted by Abhimanyu sir on the 26th of November at 3 p.m. So, do not miss it. Guys, those who are planning for CLAT 2025, BYJU'S exam prep brings to you CLAT 2025 comprehensive course. 380 hours of live classes, 300 plus recorded videos, 55 plus mock tests, 10,000 plus topic-wise practice question, 10,000 plus practice tests, study material, doubt resolution, and the CLAT Ignite magazine. Those of you who are preparing for CLAT 25, this is the course that you must join. Join it ASAP because classes will be starting very, very soon. A final reminder, those of you who are preparing for CLAT 2024, we are bringing to you 20 plus power-packed live sessions covering all the 5 subjects. Those of you who have missed any of them, go through them, especially the legal ones, because those are very, very helpful. So guys, before I say tata goodbye, don't forget to join us. CLAT 2024 detailed analysis on December 3rd and ALET 2024 detailed analysis on December 10th. So if you liked today's session, do press the like button, share this session with your friends, and definitely do not forget to click on the like button. Thank you very, very much. God bless you. Stay home, stay safe, stay healthy. Bye-bye. Take care. See you soon.